Namaskar, good morning. Suraj Singh, Bharat, Faridabad, back to talk to you. It's routine talks about country, other countries, issues, various issues. I'm just continuing about critical times of this country which you are passing through. Every citizen has to be concerned. It's very important. And before that, we have to take care of ourselves, our nation, and most important is ourselves. Say your great words. Vande Matram, our soul, like Jangan is our soul, and this is our great soul, Vande Matram. And we sing like Sujalam, Sujalam, Sufalam, Malyaj, Shitalam, Sasasye, Shamlam, Matram, Shupajyotsnam, Pulkitam, Yaminim, Fullam Kusumet, Ndrum, Dalgo, Shobnim, Suhasinim, Samudram, Bhashanim, Sukuta, Vardam, Matram. And we say in English also, Vande Matram, we salute our motherland. Mother, I salute thee. Rich, you are rich with thy harangue streams. My mother, rich with thy harangue streams, bright with orchard gleams, cool with winds of delight, green fields waving, mother of might, mother free. Glory of moonlight dreams over branches, thy branches and lordly streams, clad in blossoming trees, mother giver of ease, laughing low and sweet, mother kiss thy feet, Vande Matram. We sing all sing like thee, and we say, who hath said thou art weak in my lands? You're not weak. When swords flash out in 70 million hands and 70 million voices roll thy dreadful name from share to share, with many strengths, who art mighty and stout, would I call mother and lord. Thou who saves, arise and save, before I cry, whoever or foe back from plain and sea and shook hostile trees. Thou art wisdom, thou art law, thou art wisdom, thou art law, thou art heart, our soul, our breath. Thou art love divine, the awe in our hearts that conquers death. Thine the strength, the nerves of arm, thine a beautiful, thine charm. Every image made divine in our temples is but thine, is but thine. Thou art Durga, lady and queen, with the hands that strike and wall of sheen. Thou art Lakshmi, lotus throned, and moves 100 tones, pure and perfect, without peer, mother thrine's ear. Rich with thy iron streams, bright with thy orchard gleams, dark of your candid fire is thy sword with jewelled hair, and glorious smile divine, loveliest of all earthly lines, showering wealth from well-stored hands. Mother wine, mother, mother, mine, mother sweet, I bow to thee, mother great in thee. So we all sing this, and we are very proud of this. We admire our mind, our decoration, our power, and what she gives to us as mother. Very important, very important, and we have to consider this. In addition to sing all time Jan Hanuman Adinayak Jai Hoye Bharat Bhagya Vidata, this first line is very significant for each of us. In addition to all others, such as Constitution of this country, preambles of Constitution, articles of Constitutions, and our duties and rights and everything. We all are proud of that. We all want to realize that we are citizens of this country,
We are very proud of that. But where are we living nowadays? Are we living in real life? Or we are living in dream life? Or we are living in fake life? A life designed by certain people for all people. Are we enjoying our nation or we are impacting about our nation? Are we doing something good for our nation or we are just living in fakeism? Very important issue. Every citizen of this country must be concerned with the current state of affairs in 2019. We might say, we can say we are a very nice country. Yes, we are a nice country. Our mother has given us everything. Yes, she has given us everything. But what we have given her? Question is that, have you worked for our country? To an extent we were required to work, or we just want to blame each other and ruin this country? Bharat, beautiful, SSSDR, sovereign, socialist, secular republic, democratic republic. Preamble says that we have to live accordingly to take five parameters, five foundation stones as such to secure to our citizens justice, liberty, and equality, so that brotherhood, dignity of individual, and harmony and integrity of nation is established. This is our constitutional mandate. The structure of our constitution is this, and all articles in constitution which govern all our national citizens and whoever reside here under this provision and this structure of given in preambles is master of constitution, a doctrine of constitution that cannot be altered even by parliament. When parliament is not empowered to you can say abolish preambles, they can amend constitutional articles, but they cannot change basic structure of this constitution, which is a protection to each citizen. Citizens of this country must realize that they are living under this mandate, which is their own mandate. This mandate is given to you by yourself. No leader has given you this mandate. No past leaders have given this mandate or British guys. This is our own mandate. We all are responsible for this. So we have to be happy with that. No one exclusively is responsible. Yes, there have been designers, authors, pragmatic people, innovators, and exponents who worked on this constitution, like Dr. Bhimrao Ambedkar Sahib and many others. We are all we are all grateful to them, and there's no way that we can we can say that they are no less than devatas of this country. They are no less than gods of this country. They were not gods, but they did something which God is required to do for us. So we should pray them like that. To an extent, this constitution, establishment, and its existence is concerned. But simultaneously, we have to consider into our approach those leaders who are currently in power or who have been in power in past post-independence, post-freedom. There have been leaders who have used this constitution rightly in letters and spirit, and there have been also leaders who have abused this constitution, who have sterilized this constitution, and who are still busy in same way to defect, to desert this constitution. Whatever they can do against it, they are doing that. Constitution is not 1 year business. It's not 5 years business. It is business for centuries to go, centuries to come. We can not depend upon blind word. We have to depend upon reality and truth. This constitution is, you can say, a definition of truth of our people. If we do not consider this way, we destroy ourselves. We go in no direction if this constitution is absent. We cannot allow that state where this constitution is absent even for a day. It cannot be permitted. Whosoever they know in power, howsoever big that person may be, that person is and is
working under this constitution and articles of constitution and complete constitution framework. This cannot be denied a real fact of life. It is. So my dear people, my dear colleagues, my dear friends of this country, you have to just take a glimpse in your mind that in your mind constitution should stay in addition to your education, in addition to your problems, in addition to your status of economy, in whatever status you have or you have not, that this constitution must occupy a position in your mind, in letters and spirit, that you have to regard this, to regard yourself, and thereby to regard your nation, this great Bharat, SSSDR Bharat. That is what your individual non-professional religion is, not your God religion, but your legal religion. A kind of religion, you have to accept this. And when you take it as a religious phenomenon, you will not insult it. And those who insult it, they are like devils or ill-informed people in this country, irrespective to which party they belong to or they do not belong to. I don't take them into my consideration of having sound mind. Those people are unsound mind, misdirected, misled, and they are living in darkness. We have to check that accordingly. Out of 140 crore people, there can be 1 or 2 crore people who are misled. That is everywhere. When you have positive, there is negative. We have a day, there is night as well. So it happens, there may be a few crore people who do not want this constitution to work. But this is their intention. Majority of people, 100 crores of 150, 120 crores of people are interested in this constitution. So ignorable population does not mean anything. There have been many governments in past, many governments of many political parties, but governments were ours. They did right or they did not do right. They affected something or they didn't affect something. That has gone. There can be no change on that. That is history. But we have to learn from that. If we make mistakes again, same mistakes which are committed 20, 30, 40, 50 years back, then we are foolish in that case. We can be said we are foolish. We have to learn. Yes, there are few people, 30, 40% people who are young, who did not know that, who were not there in this world when those governments were here. So I do not blame them. They are being misled, they are being misdirected by some political class for their own benefits. And these youth just to trust them because these are not mature people. It's not their fault. They are misled. Of course, they can be misled and they are being misled. So I don't blame them also, but they have to think first and learn first. That's important. If they cannot think and learn, they cannot amend themselves. This phenomenon, not only here, this applies everywhere in the world. So this constitution and this nation have direct relationship. You cannot isolate nation from constitution, constitution from nation. As far as governance is concerned, as far as affiliation of political parties are concerned, that is a separate matter. It's your individual choice. You have full liberty according to this constitution to join whatever political party or to support whatever political party. Nobody can stop you from that decision until and unless you harm others. So I don't mind about that. But what is required, whatever political party is there, it must abide by constitution according to mandate and the duties of constitution, duties of citizenship, duties of its citizens. Political parties are also citizenry because members who belong to political parties are citizens of this country. They have to abide by this constitution. They have to abide by, they have to regard national honors, they have to regard national institutions. But unfortunately, this has been broken time and again. During emergency time in 1975-76, it also was abused by Indira Gandhi. Now it is being fully abused by Modi, and it has been abused from time to time. And everybody can be blamed for that. And top blame goes to citizenry of this country. We citizens accept everything
tolerate everything. Our tolerance power is too high, and that is what is damaging factor for each and every one of us. We say in our national anthem, Jan Gan Man Adhinayak Jayo He Bharat Bhagya Vidhata. This is only first line, but this is a climbing line. This is key line of this stanza, this song. You say this anthem says Bharat Bhagya Vidhata. What does it mean? It's backed by Jan Gan Man Adhinayak Jayo He Bharat Bhagya Vidhata. Jan are people means it's talking of people, it's talking of society, it's talking members of citizenry, it's talking of nation, it's talking of Bharat. Bharat Bhagya Vidhata. Bharat means name of this country, Bhagya means fortune, or you can say luck, and Vidhata means a kind of God. This means you have to write your luck as God writes your luck. As citizen of this country, they have to write their own fortune, our future, and they have to write everything for them. And that is what's called Bhagya Vidhata. It's up to you, people of this country. It's up to me, people of this country, what I write for me, for current as well as for future requirements. I write wrong or I write right, that's a collective responsibility. So we have to write ourselves. And our writing shall be forwarded and taken care of by legislature, executive, and judiciary. One shall take care of creation of that legislature, other shall take care of implementation of that, and third one shall take care of whatever disputes arise out of that. That is what is this line analysis says. So as citizen, we are responsible for ourselves, and government is our assistance, a legislature is our assistant, and judiciary is our support, and to ensure that no justice is caused to either citizen. It's very important to understand this. If you cannot understand it, try to understand now. You can check every line of national anthem or Vande Mataram, and you can find what you have to do. Vande Mataram says it's giving you everything. It's giving you life. It's giving you moonlight. It's giving you everyone. Land gives you everything. Lands give you power to live. Land gives you power to survive and enjoy nature, enjoy your life, enjoy your nation, and work for nation, improve this nation. This is what overall picture says. We should not fight as we fight among people. You don't know Vande Mataram, say Vande Mataram, say Bharat Vadaya. These are all childish conduct, infant behavior. We have to prevent that. Maybe some people don't know, maybe some people know. It doesn't make any difference. To an extent, these are valued and honored. I also don't know Vande Mataram, so it means I'm not valuing it, I'm not honoring that. Yes, you have to understand that. Question is not of thinking, question of understanding. Just for example, you are following certain religion, certain faith. You are chanting mantras, you are chanting prayers, but you do not understand this. You do not understand anything. You just cram it and chant it again and again and again. You think that is stored, that is useful. That is not useful. If you do not understand meaning of that, it doesn't mean anything. It's just like poem. So you want poem or you want an analysis of poem and to grasp it. If you grasp it, it's useful. And doesn't grasp only to apply that. We say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Hare Krishna, we say. But a person who says that, chants that, does he ever think, what does it mean? How many of we people actually believe in truth? So a small question is it? Do I believe in truth? Yes, I believe in truth. But do I accept that to apply in life? Nobody accepts that. It is false to say that people believe in truth and do good for others. Majority of people use lies, fake sentences, they give fake promises, and they receive fake promises, assurances. This is what our society is. And this society creates a politics, this society creates other sectors. So to say that everything is genuine is to cheat yourself. It's not. People say you are not practical.
Yes. If you are practical, you have to speak lies, you have to cheat others, you have to do all crimes or involve in crimes. And if you have truth, you cannot do crimes and you cannot speak lies. And if you don't speak lies, maybe your success is barricaded. That is fact of life. So you cannot be idealistic. In fact, you have to compromise somewhere. This is practical, degree says. And if you want to live honest life, a genuine, clear life, then you cannot do anything. Then so this person is not practical. So practical wins over facts, practical wins over truth. And practical means a degree of fake or false statements, false working. This means you may say, if you want to make good yourself, you want to make money for yourself, you have to rely upon those actions which are not favored by you, which are not interested by you, even then you accept them. For example, bribing, corruption, or so many and so forth. Various ways are there to use bad habits in life, to use fake word in your life, but you are doing that. There is no truth in acceptance, there is no truth in happening, and there is no truth in actions nowadays. Truth is only in spellings, truth is only in slogans, truth is only in name of Ram, and truth is only everywhere, just for not existence, but to be shown in showroom, to be just expressed and exhibited. That's only way people do. Truth, those who use truth always fail in this world, because those people who are higher than truth, means these are fake. Those people who use false statements, they exposedly win, but at end they fail, because they know and their conscious knows what they do is all game plan. And game plan means you can say opposite truth. Game plan is always that, and game plan is very important in these days. People are living just for sake of living and expanding their lives progressively. They are not interested just to get some struggles in their life. Those people who opt for struggles, they are called fools. Those people who believe in honesty practically are rejected. That is a fact of life. You may say, you may not say, you may sign many oaths. You may chant many oaths. You may undertake many oaths. This is a whole drama. This is all drama. Just like marriage, you take 7 revolutions, 7 rotations with many mantras, but practically you reach court for divorce, or you fight with each other, husband and wife, because you just took oath for sake of taking oath. That was ceremony of Pharaohs. Practically, it is not applicable. You don't understand that. You couldn't understand what so important say that you did that. You just completed a formality, and your marriage is void, in fact, religiously, not legally, because you could not understand what you did. Same thing is life here. We are a great nation, everybody knows this, but we are not making it great. It's great by its potential, by its wealthy nature, and by its own power. But those who think it is great, they do for this. Nowadays, there are 2 issues. Either you must have money, or you don't have money. If you are having money, you are having a status. If you don't have money, status is meaningless. There was a time when money was not everything. Character was everything. Now character, people don't know meaning of character. Character, health, yes, health is there. Character, meaning has gone, spelling has gone. Those who build a character, they can never succeed in this life. In our country at least, character is meaningless. Oath is meaningless. Conduct is meaningless. Worship is meaningless. Because everything is linked. If you are using lies in your life, if you are losing, you can say character, you can say you are not respecting your own, you are not respecting your God, you are not respecting your society, and you are going oppose that every provision. You are manipulating every provision according to your requirement, and you are claiming that that's right. This means you are a manipulator, you are a fabricator, you have a negative application of mind.
that helps you to use to get it positive, or it's not positive. So what to say? Means you are attempting crime everywhere. That's not cognizable crime, but truth crime. Truth can never be defeated, remember. If it is truth, truth is death, truth is birth, death is truth. So it is very difficult to accept truth. Those who accept truth always lose economically, always lose status, but at ultimate time they get that status and that get everything in not terms of money but in some other terms. So I'm not giving a lecture on what you are expecting. I'm just referring to life. And that life is linked to our political system, to our constitutional system, to our social system, to our institutional systems. Power game, game of power. First, what is power? People say, oh, he is in power, political power. Power means you want to stay in seat. Yes, you want to stay in topmost seat of nation or of some other company, organization. I'm talking of public seat. You want seat and that is power for you. You have to achieve that power by whatever means you can do that. Means you are going to get that power. You think that power can, that seat can be bought in terms of money. You spend money, get votes and go to that seat and you call it power. This way your power which you are getting is in relevance to, is linked to your money, is linked to election only, not your mind, not your conscience. And you then claim you will serve people of this country. How to can be related? You are spending money which is illegal. You are spending crores of rupees which are illegal. You are giving to people or to some other one and you are getting votes to reach that power. People are innocent. They trusted you. They trust you. This is fault of people. You are at fault as politician and people are at fault as voters. Both are at fault. Both are innocent in their own ways. You are innocent thinking that you will get power and you will make more and more and more and more after that. And you are claiming you are going to serve people which are not linked at all. For servicing people, you don't need chair, you don't need power. If you get, that's fine. If you get by truth, by application of truth, by genuinity, that's fine. But if you just manipulate that by election, by cheating people, by cheating society, you cannot say that that is Satyavadi seat. You want seat as your business, that's a part of your business. You are a political worker, you are a political machine, you are a political instrument, you are a political slave or super slave. Means political has become a business system, it has become a commercial art, it has become a factory to earn more and more and more, to loot more and more and more. That's a fact. See, officially lakhs of rupees can be spent in small elections according to law. Law itself is wrong. Why should you spend money in elections? If you are a good person and people are good, fact remains that neither person is good nor voters are good. Both have been misled. And they have been misled by political people, not by them also. People are swayed by talks delivered by these political leaders. They give you talks, we will do this for you, we will do this for you, and you feel happy that this man is very nice. He is talking for nation, while this man doesn't know nation. That man is a crooked one, has been a crooked one. That's why he's talking all this, I shall do this for you, when he doesn't know what to do. A man who says, I shall do this for you, he should explain how shall he do, but he does not explain. And those who are greedy, who are average people, voters, they accept that, oh, I'll get this. Both are greedy. Person is greedy to get something, and that person who is giving something is also greedy. That person wants greed of post, and this person wants in return something. This cannot be called politics. This cannot be service. Means this is a kind of transaction, imaginary transaction, negotiation.
Do you want to run your country by negotiation, by transactions of promises, or what do you want? If you want transaction promises, negotiatory promises, you cannot say that you are a citizen of this country. This means you are selling something and that person is buying something. You are selling your votes and that person is buying something in possible transaction in futures. So, this is political game or this is political blame or what? I am voting to someone. I'm voting to someone by my heart, by my conscience, by my honesty that this person would do good for me. But when I open my eyes, I go to election, to polling booth, crowds of people go, they cast their votes. For what? That their vote be used for nation, their vote be used for a person, good person be elected and join legislature and further join government and do work for nation, not for citizen, work for constituency from where one is elected. But does it happen? We have to think this way. Does it happen? Have you ever seen in your electoral life during past decades? Is it working? And if it is not working, why we are keeping it continuously if something doesn't perform? And if it performs, then it should be good. They should be happy. There should be no problem in nation. But what we are seeing on ground is not what is being spoken. There are two ways. Either you see imagination or you see practicality on life, on ground. You may say we are a great country. Yes, you are a great country, you are great people. What is happening actually and what is being said are different. Yes, we are a democracy. Is it working? Out of these 5 parameters, democracy is directly applicable to everyone because sovereignty is also a kind of imagination and not individuality. It doesn't apply to individuality. Similarly, socialism, it's a kind of imagination. It doesn't apply to individuality except in emergency, when there is a flood, when there is a fire, when there is a collapse of building, when there is some other problem to an individual faces. Welfare state has to compensate, help that citizen. That's what socialism is all about. And then if you go further down, you'll find secularism. This is also an imagination. People exploited this, and we are not guaranteeing that. Then come on to democracy. Yes, that is directly related to everybody, and republic, it's also a kind of imagination. So you can say only practical application comes from democratic values, democratic status. But are we living that? Are we complying? Are we accepting? Are we accepting? Of course, are we getting delivery in facts? Or we are delivering in facts what we are doing? Are we availing democracy? Have you defined democracy? Or it is just a game, another game? Democracy means, according to the Constitution and according to its implication, that every citizen can go to top post. Every citizen can go to whatever post according to qualifications and eligibility one has. Means the poorest or lowest citizen of this country can achieve power. That's what democracy is. I have to make my country's future myself. I have to work for my country. I have to upgrade myself. I have to get education. I have to get life. I have to get job. I have to progress myself. And everybody has to progress depending upon what resources we have. And resources can be created, augmented. It's not a problem. We can buy resources. We can proliferate resources. We can use natural resources. We have ownership of that. This is what democracy says. It simply doesn't mean that you have to vote. Vote is only one part of that. If you vote, means you vote for your future. You vote for your nation. You vote your state. You vote for future, individual future, collective future, society future. But do you analyze it sometimes? A darkness has been created by these political people, a darkness, complete darkness, that you have to confine yourself to your thinking. While thinking should be widened, it should be broadcast. There should be no limit, but you have put in a limit. You have encased in a limit.
Are you not engaged? Do we people think that a vote can be given to whosoever is there, to whom you like, to whom you prefer? Or you say, no, there's option one, option two. There's no third option. Option one is this political party. Option two is leader of political party. And there's no third option practically. This picture has been created in mind of every citizen. 98% citizens consider this way. Either this party or this head or leader. There is no third option. You accept this? Yes, everybody is accepting this virtually. But Constitution cannot say that. Law cannot say that. If a poor person, if a person who has no basis, but a good person, a reliable person, honest, sincere, hardworking person, intelligent person, if that person cannot come to our system governance, then I can clearly say that democracy is not working. If you cannot join this system, democracy is not working. If I cannot join this system, democracy is not working. If a person only rich, having good political party, can spend money in election, can enjoy politics exclusively, and democracy is not working. It's cheating, it's fraud, it's manipulation. It's like a clan business. If I am a carpenter, let me learn it at home and become a carpenter in turn, or bartender in turn. Means a kind of, you can say, artisan heredity coming in. So if you are a politician, your son can come to politician, then his son can come to politician. Same thing applies to film stars and many, many others. Then where is democracy? Then there is clanocracy, there is a familycracy, or you make a dynasty everywhere. I'm not going to define dynasty as such. Question is, what is democracy? Freedom to some people or freedom to all, system for everyone or system to some, system to all people, all religious people, all caste people, or a selected system to some. Just like somebody said, somebody sitting in the highest chair of our house in our country said there are classifications of castes, classifications of people based on where they are born. Some said Brahman is top, right? Brahman is born to teach. Such people are taking high positions in this country, and I don't know how we are tolerating that. If I am born in a Brahmin family, I am Brahmin. If I am born in a grocery family, I am grocer. If I am born in a Rajput family, I am Rajput. And if I am born in a you can say lowest class family, I am lowest class person. Intelligent people, educated people think like that. So what is future of democracy? Because democracy is linked to that. If I am Brahmin just by taking birth in some Brahmin family, then I am fool. And person who's thinking is fool. Because Brahman doesn't mean body. Brahman is soul. Brahman means your mind. Brahman means your knowledge. Brahman means a lot of responsibility. Connection. Brahma itself is Brahman link. It's not separate. Brahman doesn't mean Pandit. No. Brahman means a person who creates. That is Brahman. Creation means mind. Creation means efforts, creation means science, creation means math, and creation means every art. That's if a person is born, say, of a sweet or a tailor, Brahman. If that person has knowledge, that person understands science. Every scientist is a Brahman for me. Every is a Brahman for me. Every person saw this. That is Brahman for me. There's no difference. Brahman is not related to body, it related to soul. Because soul comes to earth. Body is a container. And if you keep body higher than soul, then you are cheating yourself. You are cheating your knowledge. You don't have knowledge. Our rishis and munis, they were not Brahmins. They were scholars.
They were scientists. They were researchers. They were engineers. They were not simply Brahmins. They were not simply Pandits. This Brahmin and Pandit is a creation of ourselves. There's nothing as such. Just to cheat ourselves, just to keep someone higher, someone lower, by force, these classes have Brahman, Rajput, or work or official persons to call, or lowest one, workers, field workers. There's nothing. This depends upon their capability. It's nowhere written in our dharma that 4 classes exist. Yes, there are classes, but not according to your body. It is according to your capability, according to attainment, according to your value, according to hard work you can do. That is called classification. So this politics has been linked. If you go to an institution, fine, go to all institutions, go to bar, go to wherever to go. You will not find representations from our society. You will find representations only from top class and clan. Democracy, an elected democracy, a selected democracy. And we are voting accordingly, unfortunately. We are voting in a way we should not vote. Our minds have been tied. Our minds have been cut. Just like religious, Maulvis, mullahs, Hindus, Pandits, and all, they're forced to believe this and don't raise questions. These gurus, so-called criminals, they force you to believe what they say, what they narrate a story to you. Dharma is a free institution. Dharma is a research institution. Dharma is a meditation institution. Dharma makes you reach God by your own methods. Dharma doesn't mean a defined religion. No. It's upon your work. It's upon, and there is there's no binding that you do. No such regulations. It's your choice because you're part of God. Dharma says you are linked to God all time. If you think that, you believe in yoga. Yoga means what? Link. When you link to God, you get information from God. This is yoga. Nothing else. Those who teach yoga in form of physical exercises, they are physical teachers, yogic teachers. You may feel I'm speaking wrong. Yes, I'm speaking wrong, but fact is that our democracy has been destroyed actually. Is being destructed every day. Loktantra. Democracy are saying there's no Loktantra. No Loktantra, no democracy. If you just consider you do vote, you go to poll, and it is finished. First of all, its name has been abused by our and people who vote. Matdan. What does Matdan mean? What is Mat and what is Dan? What Mat you can say, yes, it's my option, my decision. Yes, that's right. And Dan is donate. Once you donate, you have no right on that. But I want to preserve my right. That is my right, to preserve my right. Otherwise, I cannot say that this is representation. If I don't have preservation of my right, how can I say it's my representation? What does representation means? Representation means a kind of agency instrument, a kind of authorization. Authorization, someone, power of attorney. We just sign something, general power of attorney or special power of attorney. Sign so many instruments. What is that? That's a kind of representation. Agency, attorney. You do it. Same thing is here. That's written in the Constitution, though it's not written attorney, but meaning is same, that you are going to constitute your house from your territorial constituency. This is written in the Constitution. You can read that. You go to Article 81 and find that.
You are directly going to elect your territorial MP, and that MP is member of parliament, and that is representative of yours. It may be MP or MLA. So when you are going to elect your representative, that representative should be your representative for 5 years. But you are saying that I am going to do matdan. No, you are going to do. You are going to cast your right. You are going to use your right to elect him, elect that person. So that person is attached to you as associate. You are principal of that person, and that person is attorney to you, a representative to you, an agent to you. You cannot be separated for 5 years. This is a law. There is no recall back, but you have a right to call back. You can ask that person questions why you did not do that. If you cannot understand this, where is democracy? Where does it exist? We all forget after, finished, my job is over. Why should I worry about that? Let the person, okay, let the person work. But that person is working for you. That person forgets that. And you forget that. So where is democracy working? Is only democracy working that that person elected and the other person touch the feet of prime minister, touch feet of political party and work? That person got no relation to political party. In fact, it's their representative. That person is your representative. That person is not political party's representative. That person is not prime minister representative. That person is public representative, people's representative. That is my person. That's your person. I have every right to question that person. But that person never meets me. So where's democracy? I never find that person. Where is democracy? That person is rarely seen in house and debates. Then where is democracy? What that person is doing? I never ask. I never inquire. I never ask for report. Who shall ask in my place? Big question mark. Am I wrong? Tell me. I need person. I want to talk in parliament. I'm not allowed to direct to go because we are 140 crore people. So a method has been devised for representation. And unfortunately, that representation is also wrong. That should have different method, but it was decided long back. That one constitution means constituency means one person. Imagine 140 crore people in this country. Some constituency has only 1 lakh vote. Some constituency has 30 lakhs votes. But one representative comes from each constituency. This is a mathematically wrong establishment. Itself is mathematically wrong. Where is proportional representation? Our democracy is not working on proportional representation. They call it, but it's not working that way. It's working on single constituency representation. You may have 545 member of parliaments in Lok Sabha, and you have 140 crore people. On an average, you'll find some figure there, but that is not exactly what's happening. Then where is located democracy? Where is defined? Who defined? How defined? There are so many lapses in definition in our system, which nobody care to define. Nobody care for that, but we have to take care. We are living people. We are not dead people. If we think we are dead, then that's our mistake. That's our fault. People are educated now. It's not question to which party you support or you belong to. You can support whatever party you like. That's your choice, not my choice. And I don't disregard or honor your choice. But you regard whatever you want to regard too. You have to think first. Why do you want to be so rigid to your support that you don't listen to others? Your support is welcome. You are supported by that one is also welcome. You are fighting for that person is also welcome. You can do that. You can debate for that person in that person's interest. But you have to receive others as well. Democracy is not for one person. It's for all citizens of this country. So you should not say that I am right and you are wrong. If that approach works, then society cannot remain integrated or harmoniously working together. Cannot be that way. You have to create harmony. You have to create integration.
In democracy, it's very difficult. It's very easy to say democracy means we have to vote and elect. Vote and elect is not a procedure. It's a contemplation. It's an imagination. You are going to elect someone you don't know. You are going to elect some person who doesn't know you. Then you are electing that person. This means you have added responsibility. You have higher responsibility to ensure that person is right. And if that person is right, then if that person is not according to your will, you mistakenly elected that person, and then you have to suffer. And that's what that person seeks, that you just elect that person and then thank you very much for 5 years. This is a very dangerous democracy. I am isolated for 5 years. I can just demonstrate for nothing. You say, oh, you have democracy right, you have constitutional right, go and stage dharna, go and demonstrate, go and really have rally. Means my time should go into these all activities, all futile activities. I have to go and stage dharna. I don't have to go to job if I have. I have to raise my problem with these people who were appointed by me and who are not working. I have to request them, I have to demand them, rather they should ask me what I have to do for you. I have to go to, this is my democratic right. Yes, it is a right, but for what? You have to waste your time in these issues, democratic activities, or you have to work for nation. It is the responsibilities of these representatives to ask you what to be done. You cannot leave it to 400 or 545 people to work for 140 crore people. That is not right. Only 545 people are deciding for 140 crores people. It is in itself a mistake. Itself a mistake. Because ratio is too different. 545 and 150 crores. No relation, no proportion. We cannot leave it to them, but we are leaving to them. Why? Do we think that way? Politicians will not think that way because this is their business. One time you become MP, your life is resolved. Your life problems are resolved. Without any education, without having any value, without having any character, without having any proficiency, you make your livings forever. If that is democracy, then there is no meaning of democracy. Democracy, what should be taken out. This is not democracy. Your problems are not solved, but that person's problems are solved. Once one becomes MP, that person's problems are solved. That person is not supposed to care for you. Before election, they care for you, they touch your feet. Of course, they don't come to you, means they say, yes, they will elect me. There's no alternative. A very good rebuking statement is remaining that no alternative. What a bloody nonsense thinking you have. No alternative. A country of 140 crores people and no alternative. 90 crore voters and no alternative. What a great nation and no alternative. Your life itself is no alternative. Your existence itself is no alternative. These hell politicians say there's no alternative and their supporters say there's no alternative. What is alternative? Can you define me? What is alternative? It is your fake statement. It is fabrication. You are cheating society, you are cheating people, you are cheating nation. Your only intention is to mislead these people, to create a fake condition in their mind that yes, they're right. You are just brainwashing them, you are just mesmerizing them by saying there's no alternative. There's no alternative. Did that person who started fighting for freedom think that way there's no alternative? If you think all that, there's no alternative, you can never progress in life. Means you are sticking to something you believe that's right. Means you cannot find new ways. You cannot think of something else.
until you depend on one thing. You are clear, you are created, you can say imagination, you cannot come out of that. That's the problem. Means your mind has been bound by these politicians. These politicians, though they are not well educated, they are not well experimented, they have not values, they have no characters, yes, they are able to bind your minds. Means they are mesmerizers, they are hypnotizers, all of them. People say, oh, he's a charismatic leader. They usually write this, oh, this man is charismatic. What is charismatic? Means you can be full too much, as high you can be full someone, as much high lies you use, and you empower people negatively. You just lead them in delusion. People are happy. Oh, what a leader he is. See, there were 5 lakhs people attending his rally. You say that. He's a charismatic leader. Yes, you are charismatic to befool them. You are charismatic to mislead them. You are charismatic to bind their mind and to let them believe that you are reliable only and you are delivering nothing. You fail to deliver. These people can be befooled. But unfortunately, again they say, what to do? No alternative. People say then no alternative. I have to re-elect this man because no alternative. This no alternative formula has to be condemned, has to be thrown, has to be thrashed. Otherwise, forget democracy. If within 70 years only few people are coming to political leadership, this means there is no democracy. No democracy at all. We do not know democracy. We only know vote. And vote is not democracy. Remember, it's only a procedure. Democracy means you have to raise questions to these people. Come on, MP. Come on, PM. What you have done for me, for my state, for my nation. Tell me this. Why this is a lapse? Why economy? Why GDP is 2.5% or 3% or 4%? What you did in these 5 years, you have to explain to me or I kick you out. We have to speak that way. You may say, what nonsense is talking? Yes, I am talking nonsense. When I am losing my blood, I am losing my nation, I am losing my economy, I am losing my wealth, I have to raise a question, and it's only question now. A time comes when I have to catch hold of your throat and show you where you are. That is called nation, that is called living society, but our society is sleeping society. Yes. We never raise questions. We never write to them bluntly. We always say, mananiye, 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 mananiye. What is mananiye? We don't know. Mahamaheen we say, mananiye we say, sir we say, honorable we say. Why do we say that? Is my word free? Is my word having no value? This address I do to someone, that person, what he thinks? He thinks he is honor of this world, honorable, mananiye. Why should I extend this respect to someone who doesn't perform for me, who doesn't perform for the nation, who lies, who crooks? Why should I extend this honor to that person, to that political power, to that constitutional power? I am not slave to that person. That person is elected there, so he has to work, she has to work. People say this is unparliamentary. No, this is not unparliamentary. Parliamentary, I built. Constitution we designed. How it is unparliamentary? If I am suffering, if I am not supported by that person to whom I am paying, I have full right to scratch that person, to call for explanation, to disband that person. This is my right, constitutional right. That person has to work for me. If that person cannot work for me, I don't need that person. But people have to think this. Unfortunately, our people do not think that seriousness. Our people have not learned anything during last 7 decades. They are still easygoing.
They are just living for sake of living. They don't think they are losing something. They don't think this nation is their property. They don't value public property. They only value private property, personal property. For that they are serious. They can fight for that. But losses to nation, losses to society, which is common loss, which is national loss, we do take so lightly that there is no response to that from these people. You think they are not responsible? Everybody is responsible, but unfortunately they are immunized. Immunity is granted to them. Why we have granted the immunity? What does immunity mean? Immunity means that no legal action can be taken against them on whatever right or wrong actions they conduct. They decide. If something they decide in parliament, if some ministry decides something, or some bylaw is operated, some regulation is operated, even there is laws, you cannot go to court to hold them accountable. This is immunity. Same thing applies to judges. Immunity. Immunity applies to judges, to MPs, to executive, but it doesn't apply to citizen. If I take some decision myself for me, I am responsible and liable. I consider myself responsible in my work for which I am paid. I am paying to these people also. I am paying to MP, I am paying to minister. I means I a citizen. I'm not saying myself in person. When I say I, this means citizen, nation. Nation is paying, Bharat is paying. I means nation here. I'm talking on behalf of nation. I am paying MP, I am paying MLA, I am paying minister, prime minister, president, judges, and everybody, and government servants, and government employees, and public servants, and political lives. We are paying to them. For what? For immunity or for what? Or for accountability? If public does not consider them accountable, then public's problem it is, it's not their problem. Even if no action can be taken against them in courts, public is higher than Supreme Court. Public is final court. There is no bar to public to act against them. To an extent, law is maintained. You have every right to raise questions to them, even if you don't get answer despite of that. But we are so horrified. Some people can't speak even against them. Oh, he's MP. He is having position. People ask me like that, some people. Rutba hai saab. He is MP. What a rutba hai? What status? It's my given status to this man. He has not achieved it by passing certain examination, by passing engineering or medical science or something else. He just was voted, that's it. He has never been in school, I think. He's never in primary pass, but he's MP or PM. I don't know why I elected him. First of all, I have to check myself. I made a mistake in my election, in my selection, in my criteria of consideration. I made a mistake. But I don't know how this man is there. And sometimes I don't even know who is my member of parliament, who is my MLA, who is my councillor, who is my panchayat member. I don't know. Sometimes it's my problem because I am sleeping. Okay, let me sleep. No problem. Elections, I don't care. You go and do it. Sleep and awake, both are opposite. Keep sleeping and dreaming. People shall come to you and loot you, rob you, steal you. If you are awake, robbers will not come, and they know somebody is working there. We have to see this. We have to take into our considerations. कहाँ है बैठे हम थोड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं. भारत देश है मेरा, बड़ा शोर मचाते हैं हम. वंदे मातरम की बात करते हैं, जमीन की इज्जत नहीं करते, एनवायरनमेंट की इज्जत नहीं करते, मौसम की इज्जत नहीं करते, पानी को प्रिजर्व नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस वंदे मातरम मानते हैं, जानते नहीं. भारत भाग्य विधाता है, मानते हैं, जानते नहीं. और हम जब जानते नहीं तो हम कुछ नहीं, हम झूठ बोलते हैं. और झूठ के ऊपर सच और सच के ऊपर झूठ, यही चलता रहता है. लेकिन हम भूल जाते हैं सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, सच राम होता है और झूठ रावण होता है. ये सब जानना चाहिए हमको.
को। जय श्री राम तो हम करते हैं, जय श्री राम को फॉलो नहीं कर सकते, 1% लोग भी फॉलो नहीं करते इस देश में। समझ जाना चाहिए आपको, राम के नाम को पॉलिटिक्स में लाके हमने राम के नाम को भी गंदा कर दिया, जबकि राम पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है कि जिस तरह से एक मलमूत्र बन जाता है वही राजनीति बन गई हमारी। मानते हैं संविधान हमारा है, लेकिन संविधान को समझते नहीं, मानते हैं नियम हमारे हैं, नियम को समझते नहीं। और हमारे जो चला रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं इन चीजों के, जो संस्थानों को जो ड्राइवर है, उसमें चाहे एमपी रहा हो, उसमें चाहे सांसद हो या एमएलए हो, या उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, या हमारी जुडिशरी हो, ये सब एक तरह के ऑपरेटर्स हैं और ये ऑपरेट करते नहीं। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, क्या जल्दी है यार, आराम से बैठो ना। सारा काम इसी बार करोगे तो अगली बार क्या करोगे? सोच ऐसी हो गई है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े प्रोफेशनल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं, उन्हें पता है कि अगला प्रोजेक्ट अभी हाथ में नहीं है, इस प्रोजेक्ट में अगर खत्म जल्दी कर देंगे तो हमारी सैलरी आनी बंद हो जाएगी। ये एक विश्व सोच है, मैंने देखा है बड़े बड़े देशों में जाके काम करते हैं, यार इस प्रोजेक्ट के बाद सभी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो अगले इसके 4 महीने में खत्म कर देंगे, तो उसके बाद क्या करें, कंपनी को निकाल देगी। इसलिए आराम आराम से करो, आराम आराम से करो। सच है, ये भारत की सोच नहीं है, पूरे विश्व की सोच है। ठीक है भाई, वो एम्प्लॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसे कमाने आए हैं, तो उन्हें डर है कि निकाल ना दिया जाए। और हमारे संस्थाओं के सांसद, यार 5 साल के लिए तो चुना गया हूँ, पता नहीं अगली बार आऊंगा नहीं आऊंगा, जितना करो आराम से करो, कमा लो जितना कमाना है यार, रिश्वत लेने में ज्यादा टाइम लगाओ, लाइसेंस देने में ज्यादा टाइम लगाओ, छोड़ो बेकार की बातें। वोटर तो वोटर है, वोट कोई ना कोई दे ही देगा, ये नहीं देगा दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा देगा, मेरे को तो मिल ही जाएंगे 30-40% वोट, मैं जीत जाऊंगा उससे। इतना अपने ऊपर उनको विश्वास है कि वोटर को तो हम ले ही लेंगे। वोटर है क्या चीज, उसने तो वोट देना ही देना है, वो तो मतदान कर रहा है। हम दान एक बार लेंगे तो पता थोड़ी हम क्यों लिया, हमने क्या किया उस पैसे का, उस वोट का हमने क्या किया। आपको क्या लेना है, आपने तो वोट का दान कर दिया था, आपको क्या मतलब है इससे? अरे हम पंडित है भाई, हमने दान दक्षिणा ली है आपसे, मतलब ये है आप हमसे ये मत पूछिए, आप हमारे पैर छूजिए, हमारा आशीर्वाद ले लीजिए, बस बात खत्म। मतलब तो यही है, आपने वोट दिया उस पंडित को, वो पंडित एमपी बन गया, एमएलए बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया आगे जाके, उनके तो मजे हैं। अगर ये बात कुछ चुनिंद लोगों पे लागू होती, देश के कुछ 1000 लोगों पे, क्योंकि हमारे यहाँ 5500 से ज्यादा एमएलए नहीं, शायद 5000 ही होंगे, और ये 1000 के करीब बाकी लोग, बाकी ये थैली चट्टी के सब हमें गुलाम बनाने वाले चोर डकैत, इन लोगों ने हमारे 140 करोड़ लोगों का ऐसा ग्रिप किया हुआ है कि हम उस ग्रिप से बाहर नहीं आ सकते। एक ऐसे सोच बना के रख दिया कि उस सोच को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे माइंड्स को, हमारे मस्तिष्क को ऐसा बांध दिया इन लोगों ने कि हम उस गलत फहमी में ही रह जा रहे हैं। 70 साल हो गए, बड़ी बड़ी भाषण सुन लो इनके, बड़ी बड़ी कविताएं सुन लो इनसे, बड़ी बड़ी प्रोज सुन लो इनसे, ऐसा सुना के आपको ऐसा ब्रेन, आपका दिमाग इसमें भूसा भर देंगे कि उससे आगे आप सोचोगे नहीं, आप वही बोलोगे जो उस नेता ने कहा है। आप ये नहीं सोचोगे उस नेता ने क्यों कहा है, और वो नेता तो आपको बताएगा नहीं क्यों कहा है, क्यों नेता है, नेता का काम झूठ बोलना होता है, सच को छुपाना होता है, अपने काम को जो किया नहीं उसको बताना होता है, दूसरे के काम का क्रेडिट ले लेना होता है। सारे नेता ऐसे ही हैं, तभी तो वो नेता है। नेता तभी है वो नेता। और अभिनेता, अभिनेता तो एक्टिंग करता है, उसे कोई बताता है कि आप ऐसा कीजिए, वो करता है, लेकिन नेता स्वयं ही डायरेक्टर है झूठ बोलने का। वो जो बोलता है, आमतौर पे जो नेता आपको जो बोले उसको उल्टा समझ लेना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो नेता कहेगा मैं ये करूंगा, वो कभी नहीं करेगा, और जो कहेगा मैं करूंगा, वो कभी कहेगा नहीं कि मैंने ये करना है। जो नेता सच में कुछ करके देना चाहता है, वो कभी कहता नहीं कि मैं ये करूंगा। यही सिद्धांत है असली आदमी का, क्योंकि उसके पास काम इतना होगा, समय ही नहीं होगा आपसे बात करने का, लेकिन उसका काम आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आप क्या करेंगे, मेरे लिए काम कर दिया उसने। लेकिन ऐसा आदमी राजनीति में है नहीं, जिसको हम राजनीति कहते हैं। मैं तो उसको भ्रष्ट तंत्र कहता हूं, मैं तो उसको बेवकूफ तंत्र कहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र से बना है, और लोग हमारे इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमारे इतने ब्रेन वाले नहीं है कि वो सही आदमी की परख कर सकें। बह जाते हैं भावना में, क्योंकि भावना मनुष्य की कमजोरी होती है। मस्तिष्क से सोचने का मतलब होता है आप फिर भावनाओं से नहीं सोच सकते। वो ऐसी आपको स्पीच देंगे, ऐसी नारेबाजी कराएंगे कि आप भावना में ही बह जाएंगे, बहते जाएंगे जब तक कि कोई बैराज ना नदी में आ जाए, कोई वीर ना आ जाए जहां आपको झटका लगे, आपका सर फूट जाए।
ऐसे धक्का आपको मारेंगे कि मछलियां भी आपको नहीं, आप मछली भी नहीं पकड़ पाओगे, धक्का मार के मर जाओगे, पता लगेगा आपकी लाश मिलेगी कहीं जाके। आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं ये लोग, वोट लेके चले जाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है, एक ऐसा तंत्र जिसको गाली देना ज्यादा अच्छा होगा या तंत्र कहने के, क्योंकि इन्होंने इसको ऐसा बना दिया है। मुझे तो वोट देना है, देना तो पड़ेगा, चलो इसको नहीं तो इसको दे दो, इसको नहीं तो इसको दे दो। जैसे आप नहीं देंगे तो बीमार हो जाएंगे, और आप देंगे तो आप राजा बन जाएंगे। एक ऐसा ऐसा घोटिया पिला देते हैं, ऐसा आपको शरबत पिला देते हैं ये लोग। अरे भाई, वोट देना आपका धर्म है, जितने ज्यादा वोट दोगे उतना अच्छा रहेगा देश के लिए। जैसे देश के लिए यही कम कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने गोलियां खाई हैं, इन्होंने चक्कू खाए अंग्रेजों के, जूते खाए अंग्रेजों के, बर्फ के सिलियों पर लेटे हैं। ये ऐसी बातें करते हैं आके कि यही देश के करता धरता है। ऐसी बातें करेंगे आके आपकी। यही कर सकता है जो कर सकता है एक ही आदमी इस देश के अंदर, बाकी सब बेकार हैं। शर्म आती है यह सोचते हुए कि लोकतांत्रिक देश में ऐसी बातें हो रही हैं कि एक ही आदमी हमारे पास, बाकी सब बेकार है। सोच ऐसी बना दी जाती है। और जहां तक मैं समझता हूं, जो पढ़ा लिखा हमारे देश में ज्यादा है, वो ज्यादा इनकी बातों में आता है, बजाय उसके वो गरीब आदमी के जिसको रोटी खानी है, शाम को सोना है, अगले दिन फिर खाना है, अगले दिन, वो शायद इनकी बातों में कम आता है, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते ये लोग, और जानते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमें सपने ऐसे दिखाते हैं कि हम सोचते हैं हाँ यार, मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। ये इनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब से हम आजाद हुए हैं, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, जब से चुनाव चल रहे हैं, पहले थोड़ा था बदमाशी, थोड़ी थी ऐसी बातें, लेकिन बढ़ती गई, आज ये हालत आ गई है कि बातें ही सुन लो, मजे उठा लो। अगर ये आपको कहेंगे हाँ मैंने ये काम कर दिया, आप ये नहीं पूछेंगे फिर बताइए कहाँ किया आपने। हाँ भाई कर दिया होगा, ये साफ कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं खोलेंगे, जरूर क्या होगा, कह रहे हैं भाई इतना बड़ा देश हम देखने थोड़ी जा रहे हैं कहाँ काम क्या करने। अरे मैंने वहां ये कर दिया, मैंने वहां कर दिया, आपसे 2000 किलोमीटर दूर वहां ये कर दिया, आपको वहां जाके कह देंगे मैंने यहाँ ये कर दिया, ना उधर किया ना उधर किया, कह दिया कि मैंने कर दिया। यही आजकल का मैथमेटिकल फार्मूला है। झूठ बोलो, राज करो, एक दूसरे को भाग करो। झूठ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं। हमें इसको लोकतंत्र बनाना है। हमें समझना है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र में आप मास्टर हैं, वोटर मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, ये लोग दलाल है, दलाल ही हैं ये, और है क्या ये। दलाल किसे कहते हैं आप? एजेंट को दलाल कहते हैं, एजेंट ही तो है हमारे। हम इनको बोल रहे हैं जाइए आप ये काम कीजिए, या तो आप अपना मैनिफेस्टो लाइए या हमारी बात सुन लीजिए। यही तो पब्लिक कहती है। ये आपकी बात नहीं कभी सुनेंगे, मैनिफेस्टो लेके आएंगे, मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमारी स्कीम है ये। वो स्कीम आपको समझ नहीं आएगी, समझा वो देंगे आपको, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके सिर्फ वोट लेना उनकी मंजिल है। वो आपसे वोट ले लेंगे, बात खत्म। अरे यार, अभी तो मैंने 5 साल में देखा है, समझा है कि समस्याएं क्या हैं। अरे मैंने तो अभी तक देखा है यार, पीछे 70 साल से इतने गड्ढे कर गए थे वो, उनको मैं भर रहा हूं। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है आप तो गड्ढे भर रहे हैं, पर ये तो बताइए गड्ढे किए क्यों थे, ये हम नहीं पूछेंगे। गड्ढे कोई क्यों करेगा, पहले तो ये बता दीजिए आप। गड्ढे कोई क्यों करना चाहेगा, उसे क्या फायदा उसमें, ये हम नहीं पूछते। बस ये गड्ढे भर रहे हैं साहब, इनको अभी 50 साल लगेंगे गड्ढे भरने में। कमाल की बात है, हम उसकी हर बात मान लेते हैं, इतने बड़ी गलती करते हैं उसकी। अरे भगवान कहे तो मैं बात मान लेता हूँ, भाई भगवान कह रहा है तो छुपी बात होगी, क्योंकि भगवान अपने सीक्रेट कभी बताता नहीं है। भैया आपको तो सीक्रेट बताने पड़ेंगे हमको, पर ये हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं उनमें, विश्वास करते हैं। बुरी बात नहीं विश्वास करना, कहिए, लेकिन विश्वास भी कीजिए, माइंड से कीजिए ना, मन से क्यों करते हैं आप। पहले माइंड लगाइए, सोचिए भाई ये क्यों कह रहा है, ये अगर ये कह रहा है तो ये यार इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, झूठ तो नहीं बोल रहा। हमें इतना तो सोचना चाहिए, पर हमारी हिम्मत नहीं होती है पूछने की, हिम्मत नहीं होती। इंग्लैंड में जाइए, देखिए कॉन्फ्रेंस होती है, इलेक्शन चल रहा है, दिसंबर में इलेक्शन है। कंजर्वेटिव वाला भी, लेबर वाला भी और दूसरे भी साथ में एक स्टेज पे आ रहे हैं टीवी के सामने और बहस कर रहे हैं। आएंगे आपके यहाँ, बहस करेंगे साथ में खड़े होके? नहीं करेंगे, क्योंकि
सारे ही एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, कोई भी एक्सपोज नहीं होना चाहता, कोई भी अपनी कमजोरी को पब्लिक में आने देना नहीं चाहता। यही तो प्रॉब्लम है। सच जो होगा, जो सच बोलेगा वो सामने आके अपनी गलती भी मान लेगा और अपनी एक्सेप्ट अपनी जो उसके अचीवमेंट है बताएगा, और जो दूसरा उस पर क्वेश्चन करेगा उसका जवाब भी देगा। यही तो चाहिए होता है पॉलिटिक्स में, और क्या चाहिए होता है। अमेरिका में भी चलेगा, यहां नहीं चलेगा। हम चलने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम इतने बड़े भक्त हैं उन लोगों के, हम नहीं सुनना चाहते उसकी बुराई जिसके हम भक्त हैं। कोई भी किसी का भक्त हो, किसी का चमचा हो, पतीला हो, सपोर्टर हो, कुछ भी कह लीजिए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। जहां देश की बात होती है, मैं किसी राजनीति वाले के साथ नहीं, किसी भी राजनीति वाले के साथ, क्योंकि ये राजनीति वाले इनका बिजनेस कर रहे हैं, देशभक्ति नहीं कर रहे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, या कोई भी ABCD से जेड तक हो, ये सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन हम समझने में देर लगा रहे हैं। बहुत मुश्किल इस बात की है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे से ऊपर मैं ज्यादा खुंदक में हूं। पढ़े लिखे तो ये समझते हैं कि हमें क्या लेना। अरे यार, पढ़े क्यों थे आप? कुछ लेना नहीं तो आपने इस देश के पैसे से पढ़ाई की, आपके इस देश के टैक्स से सबने पढ़ाई की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो। स्कूलों में आप गए, कॉलेज में आप गए, यूनिवर्सिटी में आप गए, इस देश का खाना पीना आपने खाया, सब कुछ सब्सिडाइज रेट पे आपने लिया, और आज आप कह रहे हैं हमें क्या लेना है? किसको लेना है? क्या ये अमेरिका वाला आके चेक करेगा, या इंग्लैंड वाला आके चेक करेगा, या गल्फ वाले आके चेक करेंगे, कोई और करेगा चेक आके? आपका देश है, आपका टैक्स है, आपका पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी वेल्थ है, तो कौन देखेगा इसको? आप भी किसी की बुराई नहीं सुन सकते? अरे भाई, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें मोदी की बुराई करके क्या मिलने वाला है, राहुल की तारीफ करके क्या मिलने वाला है? हमें ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी की तारीफ करनी है। हम तो पब्लिक हैं, जनता हैं, अवाम हैं। हमें अपने बारे में जानना है कि हमें हमारे टैक्स से क्या मिल रहा है, हमारा टैक्स कहां जा रहा है, हमारे लिए जिसको हमने सीट पे बैठाया वो क्या कर रहा है, वो MP, वो मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो MLA क्या कर रहा है जिनको हमने बिठाया। हमने क्या उनकी पूजा करने के लिए वहां बिठाया, उनकी मूर्तियां बिठाई वहां, हम उनकी आरती उतारें क्या? हमारा क्या हक नहीं है बहस करने का? आप हमको क्यों कहते हो कि हम किसके सपोर्टर हैं, किसके नहीं है? हम तो देश के सपोर्टर हैं, हम देश की बात करेंगे। अगर आप चाहते हम वंदे मातरम बोलेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देश के बात, हमारी माँ के बारे में हम कुछ भी क्वेश्चन करेंगे आपसे। आप हमारे नौकर हो, याद रख लो, मालिक नहीं हो। हाँ, सिटीजन की हैसियत से हमारे बराबर हो, लेकिन जहां तक आप इस पद पे बैठे हो, इस पद से पैसा ले रहे हो, इस पद पे कार्य कर रहे हो, आप हमारे पब्लिक सर्वेंट हो। आपको तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब दे सकते तो इस्तीफा देके जाइए, त्याग पत्र दे दिए, और आपकी हमें जरूरत नहीं है, दूसरा आएगा। लेकिन ये मत सोचना कि आपके समर्थक हमें दबा देंगे, या आप हमें दबा देंगे, या नो कमेंट्स कह के चलते रहेंगे। नो कमेंट्स होता है तो नो वोट भी होता है। वोट देना या ना देना नागरिक के हाथ में होता है, और नागरिक अगर वोट नहीं देता तो उसका भी मतलब होता है। ये मत समझना कि वोट नहीं देना क्राइम है, कोई जुर्म है, कोई क्राइम नहीं है। वोट देने से अगर आप जीतते हैं तो वोट नहीं देने से भी आपको नुकसान होता है। मैं आपको वोट देता, लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैं किसी को भी नहीं दे रहा, मुझे कोई पसंद नहीं है, ये भी एक रिवॉल्ट होता है, ये भी एक हाई डिग्री का विरोध होता है। लोग समझे ना समझे, वोट नहीं देना अपने आप में डिक्लेरेशन है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो उसका उत्तरदायी कौन है? उसके उत्तरदायी वही लोग हैं जिनको हमने बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन से, बड़े मस्तिष्क सोच के, ये सोच समझ के इनको बिठाया कि शायद हमारे देश का, इस जनता का ये काम करेंगे, कल्याण करेंगे, वो सोचेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये तो अपनी ही दुनिया में है। वोट मुझसे लेते हैं, लाखों लोगों से लेते हैं, और जाके सपोर्ट दूसरे को दे देते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? अगर भाई मैंने दूसरे को ही देना था तो मैं आपको क्यों देता? आप जाके दूसरे को 50 करोड़ में बिक रहा है, कोई 100 करोड़ में बिक रहा है, कोई 25 करोड़ में बिक रहा है। मतलब ये है कि आपने मेरा वोट दूसरे को बेच दिया। तो मैंने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप बेच दें। आप स्वयं बिके पैसे लेके दूसरे को सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब मेरे वोट ने आपको बनाया और आपने उसको बेच दिया। मैंने आपको बेचने के लिए वोट दिया था,
मतलब आप तो बहुत बड़े कातिल हैं। वोट मुझसे लेते हैं, अपने आप को बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए। वोट तो मैंने दिया था। अगर आप 50-100 करोड़ में बिक गए तो आपने 5 लाख लोगों के वोट दिए, तो एक आदमी को आपने कितने में बेचा? ये क्या प्रश्न ना करे वोटर? वोटर गधा है क्या? दिमाग नहीं वोटर में? होना क्या चाहिए ऐसे आदमी के साथ जो आपका वोट लेके बेच दे आगे? अपने आप को बेचना, वोट बेचना सिटीजन का एक ही बात है। किसके लिए बेच दो? जो आदमी सरकार बनाना चाहता है जबरदस्ती उसके लिए बेच दे। अरे जितने सीट आई उस पर काम करो, बात खत्म हो गई। नहीं काम करते तो छोड़ चले जाओ, दोबारा चुनाव हो जाएगा। जहां इतना नुकसान रहा और नुकसान सही। आपने भी क्या किया देश के लिए वैसे, जो इतना खुश हो रहे हम कूद रहे उछल के? पब्लिक ने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप नहीं बनाए सरकार, दूसरा बनाए, या मिलजुल के आराम से बनाओ। उसमें बिकने बिकाने की बात बंद करो। मैं नहीं वोट बेचना चाहता अपना, लेकिन आप मजबूरी में जबरदस्ती से मेरा वोट बेच रहे हैं। आप मेरे दलाल नहीं है तो क्या है? आप मुझसे पूछने आए कि हम इसको सपोर्ट करें कि ना करें? आप नहीं पूछने आए, आपने अपनी हैसियत दिखा ली। आप एजेंट होते हुए भी डिसीजन अपने आप ले रहे हैं। मैंने तो आपको इसके लिए शक्ति नहीं दी थी, आप स्वयं डिसीजन ले रहे हैं। मैंने तो आपको रखा था अपने काम के लिए, आपने तो अपने आप को बेच दिया कि कमा लो जो कमाना है, फिर कौन जाने दोबारा चुनाव में आ पाएंगे ना आ पाए। इतना डर मेरे एजेंट को, मेरे नौकर को इतना डर, तो मुझे ऐसे नौकर का क्या करना है? अफसोस इस बात का है, दुख है कि संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ऐसे आदमी को वापस बुला ले या उससे गिरफ्तार पकड़ के उससे बोले लिख रिजाइन और भाग जा। नहीं है हमारे संविधान में ऐसा। ये मिस्र नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये भारत है, जहां सेंटिमेंटल ज्यादा चलते हैं, प्रैक्टिकल कम चलता है। दूसरी कंट्रियों में तो ऐसे नेता को अब तक लटका सकते थे जो सोच ही नहीं रही इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था का बंटा ठार कर दिया, शमशान बना दिया जिसने। ऐसे नेता को मौत तक लटका देते। खुश होनी चाहिए आपको, आप भारत में हो जहां धर्म बहुत चलता है, जहां भावनाएं बहुत चलती हैं, जहां डिवीजन ऑफ पीपल बहुत चलता है, जहां तेरा मेरा बहुत चलता है, बिना बात की डिबेट चलती है, जहां धर्म हिंदू मुसलमान में चलता है, एक दूसरे की दुश्मनी चलती है, बेवकूफ बनाना चलता है, वहां का फायदा आप उठा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है। जितना बड़ा समाज, जितना बड़ा देश, उतनी बेवकूफी ज्यादा, उतनी अकलमंदी भी ज्यादा। जहां ज्यादा बड़ा देश होता है वहां ज्यादा अपोजिशन भी ज्यादा होती है, वहां चमचागिरी भी ज्यादा होती है, वहां लड़ाई भी ज्यादा होती है। लेकिन देश चलता रहता है, टूट के फूट के, पुरानी गाड़ी की तरह घिस के पिट के चलता रहता है। सिर्फ 5 साल में, 5.5 साल में देश की आर्थिक व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी, और फिर कह देंगे कि पुराने 70 सालों का रिजल्ट है। आपको पता नहीं था कि 70 साल में क्या हुआ था, तो आपने क्यों चार्ज लिया था? कौन जवाब देगा इसका? अगर आपको मालूम था कि 70 साल में हाल इतना खराब हो गया तो आपको चार्ज लेना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको लेना था। अरे भाई, कोई चीज बनाने के लिए कितना समय लगता है जानते हैं आप? आपको कोई भी एसेट बनाना है, कोई भी प्रॉपर्टी बनानी है, कोई भी मकान बनाना है, एक आम नागरिक बहुत समय लेता है। आपको एक छोटा सा भी मकान अपने लिए बनाना है तो उसके साल आपको कितना पैसा चाहिए? अगर आपका पीछे से आपकी प्रॉपर्टी आ गई, आपकी वसीयत आ गई, या आपके माता पिता या उनके माता पिता आपको प्रॉपर्टी दे गए, तो बात अलग है, फिर आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसको बेच के बना सकते हैं या उसी में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी में, अकेले व्यक्ति हैं, आप दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे कमा के उसको बचा के अगर छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, आप बनाते हैं, फिर लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी उसमें निकल जाती है। और मेरा बेटा आए और मेरा बच्चा लड़का लड़की आए और क्या, इसके बाप के मरने के बाद मैं तो खाऊंगा इसको बेच के, आपकी आत्मा को कैसा लगेगा? सोचो जरा। मेरा बाप जमीन छोड़ गया बहुत ज्यादा, मैं सोचता हूँ अरे इतनी जमीन है यार, कौन लाओ चादर तान के सोते हैं? क्या जरूरत है सुबह सुबह खेती करने जाने की? क्या जरूरत है सर्दी में पानी डालने की? क्या जरूरत है? सब छोड़ो, जरूरत पड़ेगी अगले साल थोड़ा बेच देंगे, फिर जरूरत पड़ेगी थोड़ा और बेच देंगे, फिर जरूरत पड़ेगी बच्ची की शादी करनी है, पढ़ाई करनी, थोड़ा और बेच देंगे। ऐसे करते 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 एक दिन लगा कि सब कुछ बिक गया। भैया मेहनत तो हमने की नहीं, तो बिकेगा। हम तो सोते हैं, बिकेगा। हम तो खर्राटे लेते हैं दिन में भी रात में भी, बिकेगा। आपका शरीर भी खराब हो जाएगा, आपका मस्तिष्क भी खराब हो जाएगा,
आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी, आप अंदर से आत्मा में खत्म हो जाएंगे, शरीर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आप सोते रहे। और वही हाल हमारे देश में हो रहा है, बाप का खाते जाओ, लुटते जाओ। अरे आपने कुछ ही नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, और कहते हैं कि पहले कुछ हुआ नहीं, तो बेच क्या रहे हैं आप? क्या बेच रहे हैं? कहां से लाए आप? अमेरिका से लाए इसको, रशिया से लाए इसको, कहां से लाए इसको प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हैं? और आप होते कौन है बेचने वाले? कौन होते हैं आप? कितनी गलत बात है। हाँ, आपने बनाई होती, हम मानते हैं कि आपको कुछ हक तो बनता है, लेकिन आपने तो कुछ बनाया नहीं इसमें, आपका तो योगदान है ही नहीं, और आपने जो था उसका भी नुकसान कर दिया। अरे पैसे से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से मेहनत कमाई जाती है, बिजनेस से बिजनेस किया जाता है। आप तो कुछ कर नहीं पा रहे, आपको तो पता भी नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, कोई आपके पास मेथड नहीं है, कोई आपकी दूरदृष्टि नहीं है, आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, और आप लोगों से भी मेहनत नहीं करा सकते। भगवान ने आपको इतनी पब्लिक दी, देश ने इतना युवा दिया, इतना मिडिल एज लोग दिया, इतना लोग पुराना दिया, इतनी ह्यूमन रिसोर्सेस होने के बाद, आपके मानव लोग होने के बाद इतने ज्यादा, फिर भी आप उनको प्रयोग नहीं कर पा रहे, उनका यूज नहीं कर पा रहे, आप देश के प्रगति नहीं करा पा रहे, आप देश की आगे औद्योगिकरण नहीं कर पा रहे, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़वा पा रहे, तो आप क्या करवा पा रहे हैं? ऐसा कोई फील्ड बता दीजिए जिसमें आपने कुछ किया हो और फील्ड आगे बढ़ रहा हो। कोई फील्ड है ऐसा देश का? खेती का ले लीजिए आप, अर्थव्यवस्था का ले लीजिए आप, विद्या का ले लीजिए आप, डिफेंस फोर्सेस का ले लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए आप, कोई फील्ड आप ले लीजिए, आप बता दीजिए आपने उसमें क्या योगदान किया। नया तो आप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब पहले से चल रहा है। आपने ऐसा क्या किया कि हम कह सके कि पिछले 5 साल में, 6 साल में आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, जो पहले नहीं हुआ, या आपकी सोच में था, पीछे की सोच में नहीं था? बताइए। अगर कोई ये बात पूछेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? ये नहीं पूछना चाहिए आपको, आप नहीं होते पूछने वाले कोई। ये चल रहा है, सब हो रहा है, सब एक ख्याली पुलाव। अरे भाई, सब हो रहा है, आपको मालूम नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा भाई, आप बता दीजिए। वो खिसक जाएंगे, आपके सामने बहस ही नहीं करेंगे, आप ये हैं वो है करके गाली वाली देके चले जाएंगे। क्या हम इस सब के लिए एमपी बनाते हैं? एमपी का क्या फर्ज होता है एमपी को मालूम है, हमको मालूम है, हम क्यों वोट देते हैं उसको? बस बीजेपी को दे दो, कांग्रेस को दे दो, एसपी को दे दो, बीएसपी को दे दो, एआईडीएमके को, डीएमके को दे दो, इसको दे दो, उसको दो, टीएमसी को दे दो। इसके सिवाय में कुछ आता है? अगर हमें खाली वोट ही देना है तो वोट की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं वोट की। क्या फायदा वोट देने का? बस 5 साल आए, वोट दे दो। अरे भाई, आपकी ड्यूटी है, संविधान में लिखा है आपको वोट देने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? जब जिस आदमी को मैंने वोट देना है मेरे पास ही नहीं आ रहा, बात ही नहीं कर रहा, मुझे कुछ कह नहीं रहा, वो एक पेपर तक नहीं भेज रहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्या करके मैं उसकी बस वोट दे दूं ताकि वो बन जाए? गुलामी कर रहा हूं क्या मैं किसी की? अरे सबको पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हमारा हक नहीं है पूछने का? क्या हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे? कितने तरह के टैक्स देते हैं, याद है आपको? जानते हैं आप? हर चीज पे टैक्स है। ये मत सोचना कि जीएसटी ही है, इसके अलावा भी बहुत टैक्स है। आप दे रहे हैं वो टैक्स, किसके लिए दे रहे हैं? इन नेताओं के लिए, इनकी ऐश और आराम के लिए, इनकी हवाई जर्नियों के लिए, इनके बच्चे विदेश में पढ़े उसके लिए, या 28-12 रुपये की थाली खाएं उसके लिए? ये जाए तो एम्स के 10-10 डॉक्टर तैयार हो जाते हैं इनके लिए। ओ साहब आए हैं, मिनिस्टर साहब आ गए, कांग्रेस के लीडर आ गए, उसके लीडर आ गए, 10-10 डॉक्टर आके इनका इलाज करने लग जाते हैं। पब्लिक जो लाइन में लगी है पीछे हटो, वीआईपी आ गए हैं, पुलिस भी उनकी सेवा में व्यस्त रहती है, अरे खड़ी है। तो भैया, हमने तुमको इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि आप ये चीजें लो? अरे भाई, फिर तो हमसे गलती हो गई। मैं तो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहा, 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, इस तारीख को आना और उस तारीख को आना।
और ये साहब इमरजेंसी में चाहते हैं, इनके फटाफट इलाज होते हैं, उनके बुलेटिन भी आते हैं और लोग सोचते हैं, प्रेयर करते हैं, क्यों भैया, ऐसा क्या किया इन्होंने, कौन सा विज्ञान का फार्मूला दिया इन्होंने, ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट की इन्होंने, क्या किया इन्होंने देश के लिए। बस पार्लियामेंट में जूत बजारी की, गालियां दी, हा 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 किया, कुछ नहीं किया। बहस भी की तो कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा बहस का, जर्नल में आ गया पार्लियामेंट के, जी हाँ जी इसने ये बोला उसने वो बोला, उसको रिकॉर्ड कर लो और उसको देखते रहो, उसका फायदा क्या। तो कहाँ है लोकतंत्र, मैं पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न सबसे जनता से भी है और सब नेताओं से भी है और देश से भी है, इलेक्शन कमीशन से भी है, राष्ट्रपति, किधर है मेरा लोकतंत्र। लोकतंत्र में तो लोक का राज होना चाहिए, यहाँ तो लोगों को कोई पूछता नहीं, बेचारे जंतर मंतर में शोर मचाते हैं, रैली करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जहां देखा वोट का इफेक्ट हो रहा है तो पीएम भी चुपचाप चेंज करा देता है रात रात में। यार 1 करोड़ वोट कम हो जाएंगे अगर हमने ओबीसी की बात नहीं सुनी, SC ST की बात नहीं सुनी, मुसलमान की बात नहीं सुनी, लेडीज की बात नहीं सुनी, 1-2 करोड़ वोट से हमें नुकसान हो सकता है, इसका तो फैसला कर दो। और जहां से वोट मिलने की आशा नहीं है, चाहे वो कितनी भी जेन्युइन डिमांड हो, कितना भी कुछ हो, कोई नहीं पूछता। चलने तो यार, कितने आदमी इसके पीछे, 10 आदमी क्या कर रहे हैं, छोड़ो परे, 1500-1600 2000 आदमी होंगे, छोड़ो परे, क्या फर्क पड़ने वाला है, इतने तो हम ईवीएम से मैनेज कर सकते हैं। वो नेता आपके लिए नहीं है जिनको आप चुनते हैं, वो आपके लिए है ही नहीं, इसलिए बढ़िया है चुनो ही मत उन्हें। चुनो तो भैया अपना आदमी चुनो, सबसे बढ़िया बात है। इंटेलिजेंट बात यही है जिससे हम लोग डरते हैं। आप अपने आदमी चुनो, चाहे वो बेशक किसी पार्टी का ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता पार्टी का होने से। जब बिकना है आगे तो ये भी बिकेगा वो भी बिकेगा, कम से कम यहां पूछ तो सकते जो आपका आदमी भी पूरी क्यों नहीं कर रहा, फिर भी वो बिकेगा एकदम नहीं, क्योंकि नया नया है, इतनी हिम्मत नहीं होती। ये तो खाए पिए है सब, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई, ये तो आदि है हर चीज के, लुटेरे तो पुराने हैं सब, कोई बड़ा लुटेरा कोई छोटा लुटेरा, कोई शक्ल से लुटेरा, बाद में शाम को मिलकर सब एक साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, नहीं दुश्मनी तो पब्लिक की है भाई, पब्लिक के तो गले नहीं मिलते आप जाके, जिन्होंने आपको बनाया उनसे तो आप जाके बात भी नहीं करते। आप बीजेपी वाले कांग्रेस से मिलते होंगे, कांग्रेस वाले उससे मिलते होंगे, टीवी में लड़ाई करते हैं और शाम को सब शराब पीते होंगे साथ बैठ के, कौन जानता है। आपकी दुश्मनी नहीं है, मानते हैं दुश्मन तो हमारी आपसे, हमने आपको वोट दिया और हम आपको कभी मिल नहीं सकते, गले तो क्या मिलेंगे, हम तो नमस्ते भी नहीं कर सकते आपस में, हम तो कोई मिल भी नहीं सकते। आप आएंगे तो गार्ड्स के साथ आएंगे, हम आपसे बात भी नहीं कर सकते, हम आपके घर में भी नहीं एंटर कर सकते क्योंकि आपको सिक्योरिटी होगी वहां पे। तो दुश्मन तो हम है भैया आपके, चुनने वाला दुश्मन है। और जिनको हमने नहीं चुन, जो आपस में मजे ले रहे हैं, वो MP बन गए, बड़ा बंगला मिल गया, मिनिस्टर बन गए, ये बन गए, ठीक है आप लिए जाओ, लिए जाओ आप सत्यानाश कर दो शिक्षा का, बेड़ा गर्क कर दो उन लोगों का जो गरीब होकर पढ़ सकते थे, मेरे जैसे लोग जो सरकारी खर्चे पे काफी पढ़े, कम से कम कॉलेज में तो पढ़े, स्कूल ना सही लेकिन उस टाइम स्कूल भी इतने नहीं होते थे जैसे आज है, सस्ती फीस होती थी, वही स्टेटस होता था जो सरकार में होता है लोगों का, 2-2 आने 3-3 आने 4-4 आने की फीस होती थी उस समय में, और सब कुछ फ्री मिलता था, लाइब्रेरी होती थी, टीचर अच्छे होते थे, पढ़ाने वाले होते थे। तो हमें तो एक तरह से सरकार ही ने पढ़ाया, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार का कि उनकी ऐसी नीतियां थी कि मेरे जैसे बिल्कुल पीछे कैटेगरी के लोग, अर्थव्यवस्था जिनकी थी ही नहीं, ऐसे लोग कुछ तो कर पाए जिंदगी में, पढ़ाई कर पाए। चलो आगे ज्यादा नहीं पढ़ पाए, हमने आगे तरक्की नहीं की, कुछ स्टेटस तो पढ़ पाए, लेकिन आज का नेता कहता है पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, ये तो ऐश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी JNU में देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लो, कहीं और देख लो, इंस्टीट्यूशंस में देख लो, सबकी गर्दनें काटते जा रहे हैं लोग, सबकी गर्दनें काटते जा रहे हैं। ये जानना नहीं चाहते नहीं कि तो लोग पढ़ाई करें, गरीब व्यक्ति पढ़ाई करे, वही पढ़ाई करे जो पैसे वाला है, जो ड्यूरेशन दे सकता है या जो विदेश में जाके पढ़ सकता है, वही पढ़ ले। जैसे पहले एक सोच होती थी यार बड़े बड़े लोगों को पढ़ाओ, कितना पैसे वाला है उसको पढ़ाओ, वो सोच ये दोबारा रिइंस्टेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप राइटिंग करेंगे,
आप पढ़ेंगे तो आप जर्नलिस्ट बनेंगे, आप पढ़ेंगे आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे। वो ये नहीं चाहते। ये वो चाहते हैं जो कभी संविधान ना खोल के पढ़े। ये ऐसे सिटीजन चाहते हैं, ऐसे ताकत चाहते हैं। वो ना पढ़ेगी प्रेबल में क्या लिखा है, ना पढ़ेगी संविधान में क्या लिखा है। इनको ऐसे लोग चाहिए। मतलब ये कि इनको अनपढ़ गुलाम चाहिए। खाली अनपढ़ नहीं, गुलाम भी। जो मोदी मोदी करें, राहुल राहुल करें, या जो भी नेता उसका नाम लेके चलें। भगवान बाद में, पहले नेता। देश की संस्कृति ऐसी होती जा रही है, राजनीतिक संस्कृति ये हो रही है। इसमें कोई क्या करेगा? आप भी ऐसे ही हैं। आप सुन नहीं सकते दूसरे की बात। अरे भाई, मैं भी उसी देश का मालिक हूं जिस देश के मालिक आप हैं। मैं भी नागरिक उसके आप है। फिर आपकी मेरी क्या लड़ाई? ठीक है, विचारों की लड़ाई है तो बात कीजिए ढंग से। आप नेता को बीच में लाके क्यों बात करना चाहते हैं? अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो अर्थव्यवस्था से बात कीजिए। राहुल ने क्या किया, या मोदी ने क्या किया, या एबीसीडी ने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अर्थव्यवस्था चाहिए। मुझे इस बात से कुछ लेना नहीं है कि मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के पैर छुए थे कि नहीं छुए थे। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके समय में। उस बात से मतलब है, क्योंकि मैं देश का आदमी हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। अगर मनमोहन सिंह, मान लीजिए, सोनिया गांधी की पैर छूता था या उसकी आज्ञा लेता था, ये उसका और उसका रिलेशन है। लेकिन देश के लिए वो कैसा था, सवाल ये उठता है। अगर देश के लिए एक आदमी अच्छा है तो मैं उसको नमस्ते भी करूंगा, उसको सलूट भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, अगर वो देश के लिए काम कर रहा है तो। लेकिन अगर वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है तो फिर कोई भी तो हो, खाली ड्रामा कर रहा है, स्टेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब एग्जाम्पल लीजिए आप, हमारे मोदी साहब हैं, मैं इनको ईवीएम कहता हूँ, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर है ईवीएम, क्योंकि इलेक्शन जीत के नहीं आए वो। छोड़ो उस बात को भी। इतनी दुनिया घूम चुके, आज तक शायद किसी प्राइम मिनिस्टर नहीं घूमे होगी। अच्छी बात है, आप घूमिए, आप प्रधानमंत्री महोदय हैं, खूब घूमिए आप। लेकिन क्या ये जरूरी है इतना घूमना? आज के युग में जब इंटरनेट इतना ज्यादा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतनी ज्यादा है, सब कुछ बैठे बैठाए आप दुनिया से बात कर सकते हैं, आप क्यों इतना घूमते हैं? इतना लेमन वाला जॉब क्यों करते हैं आप? क्या कोई और नेता दुनिया का इतना घूम रहा है? कभी सुना आपने? अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या इतना घूम रहा है? आपसे तो बड़ी पावर है उसकी। क्या इंग्लैंड वाला इतना घूम रहा है? क्या जापान वाला इतना घूम रहा है? आप में ऐसा क्या है जो इतना घूम रहे हैं? आप क्या चाहते हैं दुनिया से? आपको क्या मिला? ये प्रश्न नहीं पूछेंगे लोग। आप जाके दुनिया में रहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फोटो नहीं है। लेकिन आप हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताइए कि आप क्यों इतना घूमना चाहते हैं? उससे मिलता क्या है? आपको कोई फ्री तो पैसे दे नहीं देगा, कोई फ्री दान नहीं दे देगा। क्यों देगा कोई? आपने उन्हें क्या दिया है? हर आदमी बिजनेस करता है, आप भी बिजनेस करते हैं, तो आपके पास 60 मंत्री भी हैं। ये क्यों बोलते हैं आप? हमने दिए, हमको पैसा देते हैं हम उनका। आप कहते हैं हम अकेले हैं, लोग भी आपके जिनके पास दिमाग नहीं है, अरे अकेला क्या क्या करेगा? कोई अकेला नहीं है, सरकार है पूरी, लोकसभा है पूरी, लोकसभा भी आप हैं, सरकार भी आप हैं, सबसे काम ले सकते हैं आप। अगर कांग्रेस से राज में अटल साहब जा सकते हैं, कोई और जा सकता है, तो आप भी भेज सकते हैं किसी को भी। लेकिन आप नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप किसी में विश्वास नहीं करते, और इसमें आप ही की चोरी हो सकती है, क्योंकि आप पता नहीं क्या गुप्त बात कर रहे हो किसी से, हमें क्या मालूम। आपके पास 60 मंत्री है, किस मर्ज की दवा है वो क्यों नहीं जाते, उनको क्यों नहीं भेजते? आप बताइए कि जाइए, ये बात कीजिए, ये मेरे एजेंडा है, जाइए बात करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेना, फोन पे बात कर लेना। ऐसा होता नहीं है क्या? आप जाइए, हम ये नहीं करें मत जाइए, लेकिन हर बात पे आप चल दें, ये बात हजम नहीं होती। मतलब ये कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है जो जिसको डेलीगेशन पावर कहते हैं। आप दूसरे को काम दीजिए। हम उनको पैसा खर्च रहे हैं, अगर मैं उनसे पैसा देकर काम नहीं लेना चाहता तो मैं उनको पैसा क्यों दूं? भारत की हैसियत से मैं अपना टैक्स क्यों खराब करूं उस पर? आपके पास इतने मिनिस्टर हैं, इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतना इंजीनियरिंग स्टाफ है, आपके पास क्या नहीं है बताइए? राज्यसभा आपके पास, लोकसभा आपके पास, 800 एमपी है आपके पास। फिर आप अपना समय ट्रैवल में क्यों खराब कर रहे हैं? आप अंदर रह के अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं ठीक करते? जब तक आप अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बेशक आप चांद पे पहुंच जाएं, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। एक आदमी को अर्थव्यवस्था सही चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था सही होगी तो दुनिया में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी अर्थव्यवस्था अगर कूड़े में जा रही है, अगर समुद्र के तल में जा रही है, तो दुनिया में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी खत्म।
हम क्या कहते हैं, देखो भाई हम स्टेटस वाले हैं, स्टेटस का एक हिस्सा इकोनॉमी होती है, एक हिस्सा एजुकेशन होती है, एक हिस्सा आपकी प्रोफिशिएंसी होती है, एक हिस्सा आपकी नॉलेज होती है। उनको अप्लाई करना होता है, खाली पैसा नहीं होता। लेकिन पैसा एक शक्ति, बिना पैसे आप किताब नहीं खरीद सकते, बिना पैसे आप लेक्चर नहीं दे सकते, बिना पैसे आप लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते, बिना पैसे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिना पैसे आप रोटी नहीं खा सकते। सबसे बड़ी बात है, कपड़े बदलना तो दूर की बात है। तो इकोनॉमी उसके लिए आवश्यक है, अर्थव्यवस्था आवश्यक है। और अर्थव्यवस्था को आप समझिए, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था खाली पैसा जो रिजर्व बैंक में वो नहीं है, अर्थव्यवस्था सरकार के पास बैलेंस शीट वो नहीं है। अर्थ का मतलब जमीन से, जमीन से अर्थ जुड़ी है पृथ्वी, पृथ्वी ने हमें क्या क्या देना है उससे तो अर्थव्यवस्था बनती है। और पृथ्वी में हमारे हिस्से वाली पृथ्वी, अमेरिका वाली नहीं। हम कितना उपजाऊ करते हैं, कितनी फसल उगाते हैं, कितना लोहा निकालते हैं, कितनी स्टील बनाते हैं, कितना एल्यूमिनियम बनाते हैं, कितना कुछ हम इन जमीन से लेते हैं और कितना हम दूसरों से लेते हैं, उस सबसे तो मिलकर बनती है। अगर आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तो इंडस्ट्री लगे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कि और ही नहीं मिलेगी तो वो क्या एक्सट्रैक्शन करेगा, क्या एक्सप्लोरेशन करेगा मेटल की? स्टील कहां से बनेगी, कोई भी चीज कहां से होगी? क्या ये बातें सोचने की नहीं है? अर्थव्यवस्था कोई एक पॉइंट नहीं है। और मैं तो कहूंगा जो अर्थव्यवस्था के शास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी लिंक करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है, कि हमारे पास कितना है और कब तक चलेगा। ये भी जरूरी है देखना, इसको विजन कहते हैं। खाली आज का देख लिया कि मेरे पास इतना टन लोहा है, इतना टन कोयला है या इतना टन ये, उससे काम नहीं चलता है। कितना और जो हम यूज कर सकते हैं 50 साल में, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में। क्योंकि आज के बारे में नहीं प्लान कर रहे, आप प्लान तो आगे, ठीक है आपकी उम्र 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष का मतलब ये नहीं है कि बात करूं वही फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है। आप 100 साल भी रह सकते हैं, 50 साल भी रह सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर है। लेकिन अब तक जो देखा गया है वो देखा गया कि मंजिल एक ही है, हर नेता की, हर नेता की एक मंजिल है। किसी भी दल का नेता हो, उनकी एक ही मंजिल है और पब्लिक भी उसको समझती है। दुख इस बात का है, मेरे को वोट कैसे मिले, मेरी पावर कैसे बनी रहे, बस यही एक टारगेट है राजनीति वालों का। और पब्लिक की हाँ में मिला देती है इस टारगेट को। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, आप क्यों इतना सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या होगा उससे? आप भी तो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, आप दिमाग वाले नहीं है, कोई भी बन सकता है। आपने अकेले कुछ नहीं करना है, एक सिस्टम है, कर रहा है काम, करता रहेगा। कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, काम चलते रहते हैं। लेकिन हमें विजन चाहिए, तो विजन तो इनमें किसी में भी नहीं है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में किसी में विजन नहीं है। जिनमें विजन था उस टाइम था जब स्ट्रगल किया आजादी का, उसके बाद विजन इतना बड़ा कि कुछ तो क्रिएट किया उन्होंने। जो आज बिक रहा है वो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। रेलवे है, हवाई जहाज है, सड़क है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, जो भी है हवा में तो नहीं बन गया, अंग्रेज तो नहीं बना के गए थे। लड़ाइयां भी लड़ी, क्रिएशन भी हुई। और कहते हैं जी गड्ढे कर गए थे। अगर इन्हें गड्ढा मानते हैं तो गड्ढे अच्छे हैं। अगर एम्स गड्ढा है तो अच्छा है, आईआईटी गड्ढी है तो अच्छी है, पॉलिटेक्निक गड्ढा है तो अच्छा है, सड़क गड्ढे है तो अच्छा है, रिसर्च सेंटर बनाया है तो गड्ढा है तो अच्छा है। हम तो कहेंगे हम ऐसे गड्ढे चाहिए, आप भी गड्ढे कर दीजिए ऐसे, हम आपको चलने देंगे आगे। हमें गड्ढे भरिए मत। हमें डर लगता है आपके गड्ढे भरने से कि हम गड्ढे पाट रहे हैं जी, भर रहे हैं जी। हमें अब डर लगने लगा है आपके गड्ढे भरने की टेक्निक से। वो कौन सी टेक्निक है कि ड्रिलिंग कर रही है वो अंदर ही अंदर, डायरेक्शनल ड्रिलिंग चल रही है, पता नहीं लग रहा। डायरेक्शनल जानते हैं, जब आपका खोद न कहीं को आपको पाइप डालना था, खुदाई नहीं करनी होती है तो एक मशीन आती है जो अंदर ही अंदर आपकी टनलिंग करके और पाइप डाल देती है, उसको कहते हैं डायरेक्शनल बोरिंग। तो हमें आपकी डायरेक्शनल बोरिंग से डर लग रहा है भाई, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं अंदर ही अंदर, हम नहीं जानते। हमें अब डर लगने लगा है आपसे। अभी तक तो समझते थे आप मोदी हैं, आप राहुल हैं, अब दोनों से डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है देश को आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ इतना जो समझ रहा है कि अटलांटिक ओशियन में जरूर चला जाएगा देश, चला जाएगा, 10 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएगा समुद्र के तल पे। और वहां क्या है, वो नमकीन रॉक्स हैं, बस साल्टिक रॉक, जिसमें हम घुस जाएंगे। मुझे नहीं घुसना उसमें, जिसको घुसना है जाए इनके साथ। अरे दिमाग लगाओ, पागल हो क्या? हमें ब्लैंक नेता नहीं चाहिए, बुद्धू नेता नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट नेता चाहिए जो सोचते हो आगे के लिए, जो दिन रात सोच के काम करते हो। ट्रैवल से कुछ नहीं होता, सोचने से होता है।
दिमाग जितना तेज चल सकता है यात्रा उतनी, याद रख लेना, दिमाग जितना तेज चलता है ना, यात्रा उतनी तेज नहीं चल सकती। हवाई जहाज 900 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाता, याद है आपको? अगर आप 10 किलोमीटर के हैं तो 900 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको वो। लेकिन दिमाग की स्पीड बहुत होती है। बैठे बैठे आप 10 ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। देखिए तो सच कौन सी, अच्छी कौन सी, खराब कौन सी, आप देखिए। आपको समझ नहीं आता, किसी कंसल्टेंट को दिखाइए, किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, फैसला कीजिए उसके बेस पे, एक्सपेरिमेंट करके देखिए थोड़े दिन, आपको तो कर दीजिए। लेकिन नोटबंदी वाला एक्सपीरियंस नहीं करिए, डिमोनेटाइजेशन कर दी तो बेड़ा गर्क कर दिया। अरे शुरू करके देखते तो रियल एस्टेट अकलमंद होते। तो अगर आपने डिसीजन ला तो 15 दिन करके देख लेते, 20 दिन करके देख लेते, लेकिन नहीं, चलने दो चलने दो, पब्लिक मेरे साथ खड़ी है। अरे पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि आपने किया क्या था, पब्लिक तो साथ खड़ी रहेगी। चलो यार, एक विश्वास पे पब्लिक ने आपका साथ दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो 400-300 रुपए कमाने वाले आदमी को भी बाहर कर दिया जॉब से। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी आपने बना दी। तो हम ऐसे नेता का क्या करें? और आज भी आप बड़े धूम धड़ाके से आवाज से आप बेच रहे हैं सब, हम 48 कंपनी बेचेंगे, हम इतनी कंपनी बेचेंगे, हम रेलवे बेचेंगे, हम हवाई जहाज का सब कुछ बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे। अरे यार, क्यों बेचना चाहते हो आप? किसने बनाया? आपने बनाया क्या इसको? पब्लिक कहती है क्या बेचो? एम्प्लॉय काम नहीं करते सरकार के, बड़ा अच्छा एक रीजन दिया जाता है आजकल, सरकारी कर्मचारी हराम खोर हैं जी, काम नहीं करते। अच्छी बात है, हम मानते हैं आपकी बात को जी, वो काम नहीं करते, प्राइवेट वाले कर रहे हैं। जाके बताइए कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं, बता दिए। मेरा चैलेंज है सबको, प्राइवेट में क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या उनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, क्या वहां एफिशिएंसी है? सिवाय एम्प्लॉय की गर्दन काटी जा रही है, इसके अलावा कुछ है वहां? आप अपने एम्प्लॉय जो रखते हैं उनको सही रखिए। अगर वो काम नहीं करते हैं तो आप उनकी सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं? पिछले इलेक्शन में आपने बढ़ाई, उससे पहले इलेक्शन में कांग्रेस ने बढ़ाई, क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर आप जानते हैं कि आदमी काम नहीं करते तो उनकी सैलरी तो कम करनी चाहिए, बढ़ाते क्यों आप? पे कमीशन को बोलिए भैया इनकी 50% सैलरी कर दो, जो काम करना करे नहीं जाए। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं भैया आपको, अपने आपको क्या विल थोड़ी लिख के दे दिए देश की? अगर आप मेरे एम्प्लॉय हैं, आप मेरे हिसाब से काम नहीं कर, या तो उनकी पोस्ट कम कर दो, दूसरा ही होता है सैलरी कम कर दो, तीसरा ही होता है करना है करो नहीं जाओ, बात खत्म है। आप कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका ड्रामा है कि एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे। ये एम्प्लॉय तो 15% कॉस्ट पे नहीं पड़ती, 10% कॉस्ट पे नहीं पड़ती एम्प्लॉयज पे। कॉस्ट तो मटेरियल पे पड़ती है, रिसोर्सेज दूसरों पे पड़ती है, बिल्डिंग की कॉस्ट पे पड़ती है, फैक्ट्रीज की मशीनों पे पड़ती है। आप उनको क्यों बेच रहे हो ये ब्लेम करके कि एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे? अरे भाई, काम नहीं कर रहे तो उसकी जिम्मेदारी आप ही की तो है, आपके एम्प्लॉयज हैं वो, उनके आप सही काम दीजिए। क्यों आप उनको इतनी जिम्मेदारी दे रहे कि सारी जिंदगी के मेहमान बन गए मेरे? निकाल दो उनको। उनको जब पता होगा कि मेरे को निकाल दिया जाएगा, मैं बाहर काम नहीं कर पाऊंगा, और अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप काम करेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको वहां भी डर है, वहां डरेगा आपको जी, हमारे 3 करोड़ एम्प्लॉय है सरकार में, 2 करोड़ एम्प्लॉय है, एक आदमी के 5 वोट, 10 करोड़ वोट गए, वहां भी आप वोट देखते हैं। अरे भाई, करोड़ों एम्प्लॉयज हैं, एक फैमिली में 2-3 वोट तो होते ही होंगे, उनके रिश्तेदारों को भी वोट होते होंगे। यार मेरा लड़का असिस्टेंट कमिश्नर है, मेरा फर्स्ट सेक्रेटरी है, उसके कितने बड़ी फैमिली होगी, सब जगह से वोट कट जाएंगे। या मेरा गया, मेरा कमिश्नर गया, मेरा आईएएस गया, मेरा चीफ इंजीनियर गया, मेरा इंजीनियर मेंबर गया, साइंटिस्ट गया, उनके वोट कम हो गए। आपको उन वोटों की चिंता है, आपको फैक्ट्री की चिंता नहीं है, आपको कंपनी की चिंता नहीं है। आपको चांस मिल गया पावर में आके कि यार 100 रुपए की चीज है 15 रुपए में बेच दो, कह देंगे जी सेल करनी थी, पैसे की कमी थी, हमने बेच दिया। आपको कोई पूछेगा भी नहीं। यही आपकी गलती करते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। आपको पूछने के लिए मैं भी बैठा हूं और मेरे जैसे करोड़ों लोग बैठे हैं। ठीक है, आप मुझे बंद कर सकते हैं, मुझे आप एक्शन ले सकते हैं मेरे अगेंस्ट या मेरे दूसरे लोगों के अगेंस्ट। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तंग होता है देश का आदमी तो सारा बोलता है अपने हिसाब से। मैं भी बोल रहा हूं, मैंने आपको इसलिए वोट तो नहीं दिया था कि आप देश को बेच दें, हर चीज को बेच दें। मैंने आपको इसलिए दिया था कि
ठीक है, कोई चीज खराब हो सकती है, हम ये नहीं कहते, स्क्रैप भी हो जाती है, चीजें यूज हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। 1% हो गया, 0.5% हो गया, ये थोड़ी सब खराब हो गया, कबाड़ा हो गया क्या? अरे भाई, आप लिमिट के अंदर रह के काम करेंगे तो अच्छा भी लगता है। आपने ऐसे लिस्ट बना ली कि इसको बेचो, उसको बेचो, इसको बेचो, उसको बेचो, उसको बेचो, आप सब बेच के कितने दिन खा लेंगे? मैं अपना घर बेच दूं, कहां रहूंगा बताइए? जब तक कि मेरे पास 2-3 घर और ना हो रहने के लिए, या मेरे पास पैसा ना हो दूसरा खरीदने के लिए, बेच के मैं क्या करूंगा, कितने दिन खा लूंगा उसको? आप माने उसको खाना भी है तो उसको तरीके से किया जाएगा, ये थोड़ी किसी को मर्जी दे दो, मेरी मर्जी इसको दूंगा। ये पॉलिसी, ये नीति ही गलत है। Well, we have to understand what democracy is. I'm speaking in different mode. Democracy is misunderstood by our people. It's completely misunderstood. Whatever government is doing now is not democratic, not at all. Democracy has been slashed. Democracy had been slashed, and leaderocracy has been put in. Means whatever leader does, that is democracy. That's not true. Leader has become, as is, exclusive honor of this nation, which is not acceptable. I don't accept this. My vote cannot be played with. My vote cannot be disregarded. My vote is my vote, my command. You cannot take it for granted. I don't permit this. My country is not for you alone to be decided with. I have to decide. I have to be involved in decision. And I mean to say, my representative. Did you ask MPs what they should do? There are 545 MPs. Forget your MPs. I don't take them into my count. Did you ask other MPs what you are going to do? And you should have asked your MPs as well. Did you take their consent? You did not take their consent. Just do it because you are leader. You take responsibility. I understand. You took responsibility in that time also, during demonetization of this concern, 8th of December 2016. But what accountability you took? Nothing. I am responsible. If you raise your hand and fist like this, I am responsible. What does it mean? Are you? What action you have taken against you? Did you take any action against you? Did you take? Do you have any answer? Sorry. If there is no one senior to you, action against you, then you have to decide self. You judge yourself and act against you. But you won't do that. But you're responsible. You're accountable. You are accountable to MP. And MP is accountable to me. MP is not asking you. I don't know why. Why MP is not asking you? Your MP should ask you. They are not asking. Your MP means your political party MP. They are not MP, they are public MP. But yet, they belong to your party. As MP, they are not reporting to you. You are reporting to them constitutionally. Prime Minister or executive report to member of parliaments. This is law. People don't understand this law. Constitution says legislature is one part, executive is another part, judiciary is third part, and illegally unconstitutional is fourth part is press, which is now supporting Modi. Legislature is higher than executive. Executive report to legislature. This is constitution. Because legislature elects government with evidence of legislature, and then it becomes government or executive. This means executive is responsible towards legislature, and legislature is responsible toward masses, toward people. This is sequence. You have to be clear about this. It's not reverse. People think it's reverse. Oh, this is a government. MP is nothing. These people thinking. MP is nothing.
this government, Prime Minister, everything. I say Prime Minister is nothing, MP is everything. You just think. MP made Prime Minister. Prime Minister did not make MP. This is our democracy. This is our constitution. MP makes. Minister does not make MP and President does not make MP. MP is made by people. MP is made by people. So MP should be receiving report from Prime Minister and they give report in Parliament. But MP just clap. That's it. Your clapping job is not job. You have to answer me. Yes, I am citizen. You have to answer me. What happened to demonetization and what are its results? You answer me. I am not asking Prime Minister. I am asking you, my MP. You were sitting there. Where is my money? Where is my money? What benefit I got from that? Where is that? Why I am getting reduced fixed interest rates now on deposits? I was getting 9.75% or 10% during last government time in 1 month same time. Now you are giving me only 6%. Why I am getting only 6%? Why not 9%? I am asking you, my MP. I am asking you, my MP. What is employment? Where are employment? How shall we get employment? What is education? Where is education? I am asking you, my MP. Why students are fighting? Why are they struggling? Why don't you solve their plight? I am asking my MP. I am not asking Prime Minister because Prime Minister is accountable to you, not to me. You give accounts. Give me accounts. If this is democracy, I am asking my agent. I am asking my Attorney General. My Attorney General, not Government Attorney General. You are my attorney. Answer me. Why these companies are being disbanded? Why PM is selling these companies? Why there is a problem in Jammu and Kashmir? Why there are other problems? You answer me. I am not interested in Prime Minister decision. I am asking you what accountability has been reported to you. You are my MP. Do we have? No, we cannot ask them. We salute them. We say MP Sahab, Netaji. That MP who doesn't answer, he deserves this, remember. Because you are paid. You are not working for free. You are paid. My sweat, my heart, my blood money I give to you to enjoy. Because I am also working for someone. It may be practice money. So I am working for someone and that person is asking, I have to work day and night for that person. Then I get my salary and remunerations. I am asking the same thing to you. You are being paid. You have all facilities. You have to tell me why there's a problem in my area. I discussed with you this problem last time. You have not raised any question in Parliament. You have not seen you in any debate. I have not seen you asking questions. Where are you? Or I can't find my MP in Lok Sabha. I tried so much. I moved here and there's television. I could not see that person there. I think he was in coffee. Taking coffee in canteen. But how many I try to find it? I cannot see him. Well, I'm surprised. Whether I voted to a ghost, or is that MP living, or he has gone, I don't know. And is that same MP or the MP other one? But last time somebody told me that this is your MP. My MP is different. My MP, I don't know. I can't find. This means, did I really elect someone? I did not elect someone. Maybe I elected someone else. This is my democracy. I do not know who is my MP. I do not know who is my MLA. I don't know. I know only this. Oh, Modi is fine for nation, and
same as find the state. Why? I don't know them. Why he's doing good. You see, he is going everywhere. He is going to all countries and my name countries up. Oh, people know there is India. People know. Oh, before people didn't know. Didn't know. Only first time they know there's India. This is our contemplation, believe me. We are all kids, KG kids. Just like your grandmother, your teachers teach you like there was a fairy, there was a pari, a story of pari, history of Rajkumar, story of Bhoot. Are we here learning stories? हमें स्टोरी जाननी है इनसे, हमें इनसे परियों की कहानी सुननी है, हमें इनसे लंबे लंबे दांत वाली जिससे खून टपक रहा है, इसकी लाल लाल आंखें हैं, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, फिर गायब हो गई। हमें अपनी दादी अम्मा से कहानियां सुननी है, या मेरी माँ ने मुझे वो सुनानी है छोटी छोटी कविताएं ताकि मेरी नींद आ जाए। अरे भाई, हमने क्या इनके लिए चुना है आपको? We have to professionalize these people. We have to professionalize them. If you don't professionalize them, it's my problem, it's our problem. We have to professionalize them. And it is educated people of this country who should think this way. Unfortunately, our educated class are less responsible than our other class. You talk to some people, some professionals of this country, some scientists and doctors and engineers of this country, you will never get good response or reliable response. They're all living in their own world. Oh, I am chief engineer, superintendent engineer, I am CMO, I am this and I'm that. Why I'm getting good salary, I have good reputation and I have good contacts, why should I worry about that? That is the root cause of all problems. Educated class who availed all facilities from society, who were subsidized every rate, who got every facility from government, from state, from public, they have come up and they are not serious. Oh, no problem, I am busy in myself, my job is safe, my family is rising, I don't care for this country, I don't think, why should I think? This approach is very bad. You just think, during freedom movement, if Gandhi, Nehru, Subhash, Patel, all those Chandrasekhar, Bhagat Singh, had they thought like that, as you are thinking, would you be here as you are now? Or you will be under British till now? You never experience this. You never feel this pain, where your country is going. You don't even talk of that. I ask many people, do you know Constitution? Highly profiled, highly educated people. Do you know what is Constitution? Do you know something like that? I'm not talking of students. They don't know, of course. I'm not talking of collegiates. They don't know. But at least those people who are in responsible positions, who are high profile engineers, doctors, professors, and all those, at least they should know what is that. Or we have to depend upon advocates for that. And the advocates too also don't know everything. Advocates know only that much which is linked to that practicing profession. If it is the income tax professional, or it is a divorces professional, or criminal law professional, they know details of that only. Well, if we don't try to understand this, we cannot teach our kids this. We cannot teach society this. Every professional, engineer, doctor, chartered accountant, or who are they are so-called professionals. They have got a constitutional duty to teach society scientifically, which is duty of a citizen in our mandate of Article 51A. They are bound to teach others, irrespective of that is syllabus of class or not. You have a duty to teach your society what is right, what is wrong, but you never teach that. Oh, I am doctor, I am busy in my profession, I don't have time, and engineer busy in his profession. Nobody has time. Yes, you are very busy. It's very nice, but country is falling every day. Country is falling every day. You are educating your kids to earn a good package. You are not educating them to learn.
to help nation. You are not educating them that way, but you are saying you are Indian, you are Bharatvasi, you have pride also, but that pride is only for your selfish nature, not for nation. If you talk to someone about what's happening, what's government doing, means they take it differently. Means if you support what they think, that's fine. Otherwise, you belong to a different party. Means we have our own imagination. Individually, we don't respect given in preambles, which is given in preambles and in rights, that we have to develop individual dignity. We have to develop fraternity. We have to develop brotherhood. We have to develop harmony and national integrity. But when you link someone to someone, some political party, then where is individual dignity? Means I don't have my individual dignity to talk for or against nation, or to criticize government, or to criticize opposition. Don't have any right. If there is no right, then there is no meaning of constitution of this country. There is no meaning of legal framework. Then we are not a society. Means everybody is having different society. I have every right to examine what is happening in this country. I have every right to do that. But am I doing? That's a question mark. We simply cannot live forever just by saying we people of this country, having solemnly resolved to constitute our country into SSSDR and then assure to our people equality, justice, liberty, and then lead to what I said, brotherhood, fraternity, etc., etc., etc. And duties, you read that duties. I post everything here. I posted that one. Are you doing duty? If you are not able to discharge such duties, you cannot claim that you are citizen of this country. Read each and every duty. Each and every duty is there. You read that, you are talking about Hindu Muslim, you are talking about Masjid Masjid, you are talking about statue and all that. That is not our duty. That is society. As nation, we have different duties. Scientific development, engineering development, inquiry, move up and up and up. Be professional, be scientists, be doctors, be administrators for progress of country. Why don't we think that way? And if you don't think that way, you are not citizen of this country in principle. This is your duty you have to do. You want rights. If you want rights, take rights. Go and fight election. People should vote you. But unfortunately, people do not have any concept that some non-political party candidate can also win. Yes, they win, but not common man, remember. Common men do not win except they are either celebrity, or they have been thrown out of some party, or they desert some party, or defect some party, and by virtue of their own past position, they win. If an unknown person who may be very good, he contests or she contests election, certainly deposit will go. Because people have no trust in others. They have trust in these corrupt politicians. They have trust in BJP, they have trust in Congress, they have trust in all those who have nothing to do with citizens of this country, except in slogans, except in manifestos. In reality, no. If you commit suicide, so commit suicide. If your bank is not giving you money, don't worry. No problem. We shall give you 5 trillion economy. We shall give you 10 trillion economy. We shall give you 50 trillion economy. Just have a belief, faith in us, and we give you blessings. No problem, citizen, no problem. This is my blessings. Keep these blessings and sleep. But vote me. Don't forget to vote me on election day. That is target. That is target.
to construct your, to develop your country, to make future of your kids, to make future of your society. It is you have to work, no one else. These people, our representatives, have to support us. We have not to support them. They have to support us. They are bound, they are paid for that. They have to think for education of our kids, free education. But they are not thinking, they are privatizing everything. Can you pay for private sector? Are you that rich? If everybody has to pay lakhs and lakhs of fees every year, and then admission fee and all that, and then examination fee and all that, from where a person who is earning 300 rupees a day get that back? From where? This means only that top class, just 5 to 10% people or 15% people, they can go to these colleges and universities and get certificates. Are they only citizens of this country? Only those citizens? No one else? Had supported education in college, I won't be here as I'm talking to you. I will be selling either water somewhere, or I will be working in some excavation, or I will be breaking some stone somewhere. Means hard job I had to do. I would not think for this country. Of course, I would join line to vote. Never think. Now I think first, then vote. That would be difference. Question is, why are we close to these leaders? That's my question. My constitution does not give power to me just to vote. It doesn't give just a power. It gives me more power than that. Constitution clearly says that you are this country. It is your authority that you constituted me and you used me and you gave me to yourself. So you have to elect these people, Constitution says. And if you elect these people, means they have to report to you. Constitution says here, you are first of all voting your candidate. You are just depending upon those candidates who are floated by these political scandalers, political firms, political shops, commercial and industries. I call them political commerce and industries because for them politics is nothing but money. Again I am saying money. If I have to accept only these political people, these candidates floated by certain political party, this is I am indirectly forced to accept either them or else. This, until whole people in your area go for one independent candidates, that may work, but in general it doesn't work. This means directly or indirectly I have to read poster of candidate and that's it. There will be photo of prime minister or opposition leader or chief minister or some other person and then a candidate. After that, you decide yourself whether or not to vote that one. They will come, they will not come to you. Then nobody shall come to you. If you vote them, fine, it's your duty. And if you vote them, no one. Why? So don't worry. This means actually zero. My involvement in election process is zero because simply I have to vote and that's all. They are something, okay, it's our manifesto. My party has issued manifesto, you read that. Simple answer. Read that manifesto. I cannot come to all of you to talk to you. You cannot come to talk to me, fine. Then why should I? That's also fine. Question has to come in my mind. जरूरी है ये क्वेश्चन आना कि भाई आप पोस्टर लगवा दिया,
अपनी फोटो लगा दी, किसी प्रधानमंत्री की फोटो लगा दी, किसी अपोजिशन के नेता की फोटो लगा दी, किसी मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी, किसी लगा दी, और आपने अपनी फोटो लगा दी, अपने नाम लिख दिए। निर्भय, क्या बोलते हैं उसको, कर्मठ, कर्मठ कार्यकर्ता या कर्मठ कर्ता, आपका भविष्य बनाने नहीं क्या क्या उसमें लिख देंगे। बस इतना ही पढ़ के आपको वोट दे देना है, भारी बहुमत से जिता दीजिए। आपको से मिलना, उसका भी जरूरी नहीं है आपसे मिलना, आप कल्पना कर लीजिए मिल लिए, क्योंकि हम अकेले नहीं, आप है, हमारे पास अपोजिशन का नेता है, हम अकेले नहीं हैं। अकेले तो आप हैं क्योंकि आप वोट हैं, वोट तो आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा वोट, क्योंकि हमारी आंखें लगी हैं आपके वोट पे। नहीं दोगे तो आप जान जाएंगे, और फिर आपकी खैरियत नहीं। देख लेना, सी हमारे पास है और ईडी भी हमारे पास है, फिर आप भागते रहिएगा, भागते रहिएगा, कहां तक भागेंगे आप भैया। राजनीति यही है, आज का लोकतंत्र यही है। और साहब, हम कोई ऐसे नहीं बैठे यहाँ कैंडिडेट बन के, हम इधर ऐसे नहीं बन गए 10 करोड़ में टिकट लिया है और 10-15 करोड़ हम खर्चेंगे भी। भैया आप वोट दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो आप नहीं देगा तो कोई और देगा। हाथ हमसे जोड़वा लीजिए, हम जोड़ देंगे, हम जोड़ के रखेंगे 10 मिनट तक आपके सामने। आप कहेंगे तो हम पैर भी छू देंगे आपका, लेकिन हमसे प्रश्न मत करना, प्रश्न मत करना बस हमसे। ये मत कहना ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने नाम में वोट मांगने नहीं आए, हम तो अपने नेता के नाम में वोट मांगने आए हैं, विश्व नेता के नाम में, नाम में वोट रहे। आप इसलिए वोट दे दीजिए क्योंकि वो हम है, बस आपकी ड्यूटी है। नहीं आप देंगे तो ठीक है, आप नहीं देंगे, आप देश के लिए सेवा नहीं कर रहे, आप देश के लिए सोच रहे। 10 करोड़ जो दिए हैं 25-30 करोड़ हो जाएंगे। अब आप सोचिए, मेरे 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ जो मैंने लगा दिए 5 साल में, कितने वापस आने में, आप उसको ब्याज लगा लीजिए, जोड़ लीजिए, मेरे 50 करोड़ जो मैं लगा रहा हूँ, ये 100 करोड़ तो बनने चाहिए, मुझे बनाने हैं। जीतने के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि रिस्क भी मेरा है, अगर मैं हार गया तो ये मेरा नुकसान हो गया, अगली बार के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप तो सिर्फ वोटर हैं, आपका क्या गया, गया तो मेरा। मैंने खून पसीने की कमाई से दिन रात मेहनत करके ये पैसा कमाया था, जो मैं सिर्फ इसलिए खर्च रहा हूं कि आप मुझे कृपया करके वोट दे दीजिए। आप वोट देंगे तो मेरा एफर्ट्स पूरा हो जाएगा। हाँ, रही समस्याओं की बात, तो समस्याएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपको भी तकलीफ होगी, मैं आपके लिए प्रेयर कर दूंगा, आपकी दुआ कर दूंगा, आपका घर गिर जाएगा तो 2-3 लाख में मिलवा दूंगा, इतना ही कर सकता हूँ। बाकी तो आप वोटर हैं, देश के मालिक तो आप हैं, मैं तो आपका प्रथम सेवक हूँ। इसीलिए लोकतंत्र है यहाँ। जय भारत के संविधान की, जय भारत के लोकतंत्र की। एक ही बार तो वोट देना है आपको मुझे, 5 साल के लिए तो मैं फंस जाऊंगा। क्या बात है, एक बार वोट देने से आप 5 साल के लिए फंस जाएंगे। अरे 5 साल आप ऐश उड़ाएंगे, करोड़ों रुपए आप कमा लेंगे, दुनिया आप घूम लेंगे, गाड़ियां आपके पास होंगी, फ्री के फोन आपके पास होंगे, फ्री की थाली आपके पास होगी खाने के लिए, और जूत बाजारी करेंगे, आप दुनिया में जाएंगे, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, सारी दुनिया आप घूमेंगे और फंसेंगे। अरे आप तो खाली फंसेंगे, मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं तो यही सोच सोच के मर जाऊंगा कि मुझे नौकरी इस जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों को कुछ होगा कि नहीं होगा। आप तो खाली घूम के फंस गए, मैं तो जिंदा लाश बन गया। आप कम से कम वहां जाके लड़ तो सकते हैं, अपने डिमांड तो दे सकते हैं, मेरे को तो सुनने वाला भी नहीं है, किसको कहूं मैं। आप तो सीट पे मिलेंगे नहीं,
आपके घर भी जाऊंगा तो आप कहीं फोन करने में लगे होंगे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो या आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। मैं तो दरवाजे पे वेट करता रहूंगा, साहब बिजी हैं, कल आना, 2 घंटे बाद आना, अभी साहब व्यस्त हैं, अभी टूर पे हैं। मेरे तो आप वहां भी काम नहीं आएंगे। वोट क्या दिया, मैं तो फंस गया, अच्छी तरह से फंस गया। नहीं दिया तो भी फंस गया और दिया तो भी फंस। कहते हैं शादी के लड्डू है, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ये भी वही लड्डू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। मेरे वोट मेरे काम नहीं आता क्योंकि मेरा वो एमपी है नहीं, पता नहीं किसका एमपी है। वोट तो मैंने दिया, मैंने तो मोदी के नाम पे दिया, तो वो एमपी कहां से आएगा। मैंने तो राहुल के नाम पे दिया था, वो एमपी कहां से आएगा, प्रश्न तो उठता है ना। मैंने एमपी का तो नाम भी नहीं देखा था जब मैंने बटन दबाया था या मोहर लगाई थी। मैं तो जानता भी नहीं है मेरा कौन एमपी है। मैंने तो निशान देख के दे दिया था। मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं नाम नहीं देखता, मैं निशान देखता हूँ। यस, आई एम अ डॉक्टर, आई एम प्रोफेसर, I am engineer, I am IAS, I am military officer, everything I am. But I am only symbol. That's it. What a brilliant person I am. Do you know? I am very intelligent. I am very intelligent. I have elected best person, but I don't know name of that person. I don't know where he lives, what he does, what his profession, whether he's a criminal or good. I only sent 233 criminals into Lok Sabha 545 MPs. Is it not an achievement, you think? Only 233 criminals only out of 545. I avoided 55% to be criminals. I saved myself. Otherwise, all would be criminals there. Great. I am great. I am voter, so-called voter. My vote is very powerful. It can elect criminals to Lok Sabha. It can elect terrorists to Lok Sabha. It can elect robbers into Lok Sabha. It can elect anybody, but not genuine person. And I don't know those who have no crimes against them, what crimes they have done. I don't know. I never asked them. They never told me. They never told me. I never asked. I had only to vote. That's it. So I just voted and came back. Later on, he sold my vote. He was here in this party, but just by getting money, he supported another party. So my vote has also been sold. This means my conscience has been sold, my mind has been sold, and he has made money. I am still there as without money. This man made 500 crores in 5 years, and I have lost my job. I don't have job. I have retired. Now I have no pension. I was just expecting 9% FD interest. I am getting only 6%, and also TDS deduct. TDS there. What is my value as a voter? I died when I was living. I am dead also now when I have voted. My vote is foolishness, or it is intelligence, or it is a responsibility. I am not clear. They say you have to vote. There was a song, पप्पू खाना खाता है, पप्पू टाई लगाता है, पप्पू सब कुछ करता है, वोट नहीं देता. Do you know that? There was a song designed by election commissioner. अब क्या करें? पप्पू तो काम नहीं करता, पप्पू वोट नहीं देता. अब पप्पू कौन है? मेरे ख्याल तो पप्पू अब नेता है. अब पप्पू वोटर नहीं है. अगर वोट देता है तो पप्पू नहीं है, और वो नेता हरामखोरी करता है, काम नहीं करता, तो वो पप्पू है. कौन पप्पू? एक शब्द का कितना सा यूज किया. अरे वोट देने से अगर सब कुछ हो जाता तो वोट तो देते आए 70 साल से. बस वोट दे दो, बात खत्म. हमारा 5 साल के अपॉइंटमेंट कंफर्म.
कोई प्रोबेशन नहीं, कोई प्रोबेशन नहीं, तो किस बात का है? 5 साल परमानेंट। और जो बड़े से बड़ा एम्प्लॉय आएगा आपके साथ, जिसके आप पेपर साइन करेंगे, आपका मिनिस्टर साइन करेगा या आपका कोई भी साइन करेगा, उसका प्रोबेशन भी है, उसपे कंडीशंस भी हैं, उसको निकाल के बाहर भी कर सकते हैं। हमें कोई नहीं निकाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन एमपी वाले को कोई नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन एमपी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो वोटर ने चुना है। वोटर जिंदाबाद, भारत का वोट जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, षड्यंत्र जिंदाबाद, गाली गलौज जिंदाबाद, झूठ सच जिंदाबाद, सब कुछ जिंदाबाद, वोट जिंदाबाद, वोट जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? मुझे सिर्फ वोट की भीख है, दे दे अल्लाह के नाम पे, तुझको ताता रखे, उसको अपना वोट दे दे, बस मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आशीर्वाद कौन किसको दे रहा है सोचिए। वोट दे दो, बस मेरी भूख मिट जाए, मुझे रात में नींद आ जाए, मुझे एक मंत्री का पद मिल जाए, बस मैं शांति से जीवन बीता दूं। काम वाम तो चलता रहेगा, हमने एक आदमी चुन लिया है, वो काम करता रहेगा। आप बस हमें वोट दे दीजिए। हम कभी कभी आपको स्पीच दे दिया करेंगे, कभी कभी आपको भाषण सुना दिया करेंगे। आपका पेट भरे ना भरे, आपका मन, क्या मन की बात हम करेंगे आपसे, और मन की बात करने से बड़ी शांति मिलती है, मन शांत होता है। उदासी भी हो तो हंसी में बदल जाती है। इसलिए हम करते हैं मन की बात। हम मस्तिष्क की बात करेंगे तो हमारा मस्तिष्क ही खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सोचने की शक्ति नहीं है। और जब हम गंदी संदी बात करेंगे तो आपका भी मस्तिष्क खराब कर देंगे। इसलिए मन की बात को आप विश्वास करके लीजिए, हमारे मन की बात की आप पूजा कीजिए, और फिर अपने मन की बात अपने घर वालों से कीजिए। इसीलिए सब एक दूसरे से मन की बात करते रहेंगे और मन साफ होता रहेगा। पीछे से जय श्री राम करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, जिंदगी आराम से कट जाएगी और हम भी आराम से जी लेंगे। फर्क इतना होगा कि हम आराम से जिएंगे, आप थोड़ी मुश्किल से जिएंगे, क्योंकि आप हमारे मालिक हैं। नौकर आराम से जीता है, मालिक मुश्किल में जीता है। तो हम तो आपके नौकर हैं, हमसे बढ़िया नौकर आपको मिलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आप। हमसे बढ़िया मिल नहीं सकता आपको पूरे देश में, तो क्या पूरे विश्व में। हम ऐसे नौकर हैं। हम नौकर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि नेता हम बन गए तो हमें उठा के फेंक दिया जाएगा। हम नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन आप हमें नेता कहते रहिए, कोई बात नहीं। यही है लोकतंत्र हमारे देश का। लोकतंत्र ना होकर षड्यंत्र बन गया है। ये ऐसा षड्यंत्र बना दिया गया है कि आप जैसे छोटे लोग, जिनको छोटा कहा जाता है, जिनकी कोई राजनीतिक बैक नहीं, जिनकी कोई डायनेस्टी नहीं, जिसकी कोई पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं, कोई उनकी ताकत नहीं, कि सोच भी ले कि हम लोकसभा का चुनाव तो लड़के देख लें एक बार। कितने लोग हैं जो इतनी शक्ति रखते हैं। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई 10 आदमी भी देश में होंगे जो बिल्कुल कॉमन ग्राउंड से हो, जिनका कोई राजनीतिक कनेक्शन ना हो, और वो एमपी का इलेक्शन लड़ लें। वो अलग बात है, कोई जबरदस्ती फॉर्म भर दे, भाई दिखाने के लिए मेरा नाम आना चाहिए, और अंदर बिल ना हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन वास्तविक इतने कैसे लोग हैं जो खड़े हो कि मैं लड़ूंगा। कुछ लोग हुए हैं, उनको लड़ने भी नहीं दिया गया, ऐसे भी लोग हुए हैं। वो एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल हमारे साथ है, तेजपाल बहादुर का है। देखिए, लड़ने नहीं दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अगर आप ऐसे आएंगे और इन हमारे नेताओं को लगा ये हमारी टांग खींच देगा, हमारे ये 1 लाख वोट काट देगा, तो भी वो आपको लड़ने नहीं देंगे। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र न होके ये नेता तंत्र है, ये राजनीतिक पार्टी तंत्र है, ये भक्ति तंत्र है, ये चोरी तंत्र है, दुश्मनी तंत्र है। अरे जो मुझे वोट नहीं देगा तो मेरे अपोजिट को भी नहीं देगा, याद रख लेना। ये फिल्म है, बम्बैया फिल्म, या तो मुझे वोट दे दो या किसी को नहीं, नहीं तो मैं अपने आप डाल दूंगा वोट आपके। और डालते हैं, डालते ईवीएम हमारे पास में, जय ईवीएम माता की। आप मत दीजिए, हम ईवीएम बदल देंगे, क्या जाता है। हम तो आपसे पहले कोशिश करेंगे कि आप सीधी तरह से हमें वोट दे दें, क्योंकि वोट तो हम ही देंगे, आप किसी और को दे नहीं सकते। आप नहीं देंगे तो हम लेना भी जानते हैं। सुभाष चंद्र एक थे यहाँ पे, अगर हम हार जाते हैं तो उसको जीतना भी जानते हैं। और कोई हमें
डोनेशन देता है पार्टी को तो हम उसको लेना भी जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं। इस सत्ता को पाने के लिए हम 1 करोड़ भी झूठ बोलने पड़े, 1 करोड़ भी जालसाजियां करनी पड़े, हम करेंगे। हम भारत का लोकतंत्र इसे ही मानते हैं। आप क्या मानते हैं? आपको बधाई हो। हम आपके हिसाब से तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। ये देश हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम ऐसे ही सत्ता में आते रहेंगे, इस बार नहीं आए तो दूसरे को आने देंगे। ये हमारा उनसे टाली है, हमारा पूल है। एक बार आप, एक बार मैं, एक बार आप, एक बार मैं, 2 बार मैं, एक बार आप, ताकि वो भी खाते रहें और हम भी खाते रहें। उनके भी बच्चे भूखे ना मरे, हमारे बच्चे भी भूखे ना मरे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम पावर में नहीं हैं, हम लेजिस्लेचर में नहीं हैं, हम एग्जीक्यूटिव में नहीं हैं, तो हमें क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलने वाली। हम जानते हैं हमें ओबामा कर सकता होगा वेस्ट की नौकरी, बेयर की नौकरी, वेटर की नौकरी वो कर रहेगा। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि इसलिए हमने अपनी पेंशन परमानेंट रखी हुई है, हमने सारी फैसिलिटीज परमानेंट रखी हुई है। अरे आपका थोड़ा सा टैक्स ही तो लेते हैं हम, आप समझते क्यों नहीं? हम आपसे थोड़ा टैक्स ही तो लेते हैं अपने खाने के लिए, और क्या लेते हैं आपसे? यही लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र विश्व में मानक लोकतंत्र है ये। इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं हो सकता। ये हमारी हमारी खास बात है। हम ऐसा ही लोकतंत्र रखते हैं जिससे लोग पीछे रहें और नेता लोग आगे रहें। नेता लोकतंत्र है, हमने नेता शब्द वहां से हटा दिया जानबूझ के, ताकि लोकतंत्र रहे। नहीं तो ये नेता तंत्र है, ये पार्टी तंत्र है, ये चोरी तंत्र है, ये डकैती तंत्र है, ये बेवकूफ बनाना तंत्र है, ये लूट खोसट तंत्र है, ये दुकान है बेचने की, ये फैक्ट्री है बेचने की। हम कुछ भी बेच सकते हैं, हम पक्के सेल्समैन हैं, पक्की मार्केटिंग करते हैं। हम आपकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम आपको भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे आपको भी ले सकते हैं अपना काम कराने के लिए। कुछ नहीं कर पाएंगे हमको, क्योंकि ये भारत है। यहाँ नेता और अभिनेता में कोई फर्क नहीं है। वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पे ड्रामा करता है और यहाँ तो ड्रामा ही करते हैं। शपथ ले लेंगे तो झूठ बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? शपथ ली हमने, हम झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। हमने शपथ लिया भाई, पाप लगेगा हमको तो। हमारा लोकतंत्र देसी लोकतंत्र है कि विलायती लोकतंत्र है, हम नहीं जानते। हमारा लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, विश्व में। अरे देख, एक भी गोली नहीं चली, प्रॉब्लम हो गई। 300 आने के बाद जम्मू की सॉल्व हो गई। एक भी गोली नहीं चली। वहां कहते हैं 1 करोड़ आदमियों को दबा के रखते हैं मिलिट्री के 10 करोड़ में, 10 लाख मिलिट्री के नीचे, और कहते हैं शांति है वहां। अरे शांति किसे कहते हैं? ये शांति ही तो है। एक गोली नहीं चली, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक गोली नहीं चली, सब कुछ शांत हो गया। वाह वाह, यमराज भी आए, यमराज भी हार जाएगा। ऐसी दवाई आपके पास है, आप मरने भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, और कहेंगे लोकतंत्र है। गलती तो बेचारी जनता की है, पब्लिक की है, उनकी गलती है, आपकी तो गलती है नहीं। आप तो परमात्मा हैं, आप परमात्मा के भी परमात्मा हैं। आपके वचन सारे सत्य हैं, आप जो कहते हैं सत्य है। सत्य के बिना आप कुछ नहीं कहते। आपकी अपना है, क्या महात्मा है। आपकी शक्ल देख के हमारा साफ सही हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। आपके पास आके गंगा पीछे रह जाती है, गंगा भी फेल हो जाती है। आप पर गंगा है। लोग मर जाएं आपको क्या, नौकरी मिले ना मिले, लोग नौकरी से निकाल दिए हैं आपको क्या, आपको क्या? आप तो हैं को उस ऊंचाई पर बैठ के दिखने वाला है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ के कुछ दिखेगा आपको, वहां अंदर बैठ के कुछ दिखेगा? दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको कुछ भी वहां से। और आप देखेगा भी तो कहेंगे मेरी आंख में कैटरैक्ट आ गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? अरे आपको क्या, आपको क्या? आपको बस सीट मिलनी चाहिए,
पब्लिक जाए भाड़ में। क्या करेगी पब्लिक हमारा? अरे यार, इसमें से इस तरह सेटिंग कर दो कि 30-40% लोग हमें वोट दे दें, बस हमारी गाड़ी चले। पहले कांग्रेस भी यही सोचती थी, एससी का ले लो, एसटी का ले लो, ओबीसी का ले लो, मुस्लिम का ले लो, सारे नहीं तो आधे आधे तो ले लो, तो हमारा काम चल जाएगा। बाकी इधर उधर बंटवा दो, हमें 40% मिल जाएंगे, हमारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था भाई। वोटर हमेशा मूर्ख बना है, बनता रहा है, बन रहा है और बनता रहेगा। क्योंकि वोटर का मतलब होता है रॉबर्ट, उसकी आंखें बंद, उसके कान बंद, उसकी नाक बंद और उसका दिमाग बंद। बस आप ऐसे ही रहिए, सुखी रहेंगे। अगर आपने इन क्लोज्ड दरवाजों से एक भी दरवाजा खोला तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। आपको हमसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। हम जो बोलते हैं मन की बात को, उसको अपने मन में रख लीजिए, और जो हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो उसको आप कर लीजिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं इस सीट पे कि हमको बता सके कि आपको क्या करना है। हम आपसे स्वच्छ टैक्स भी लेंगे, भारत को स्वच्छ करने के लिए टैक्स भी लेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि आप झाड़ू ले लीजिए और अपनी गली, अपनी दुकान, अपने आसपास का क्षेत्र साफ कर लीजिए। ये हम आपको बता देंगे, ये हमारा काम है बताना। भाषण देना, भाषण देना इतना आसान नहीं होता है। आप लिख के ही दिखा दीजिए आपने क्या बोलना है, और बिना लिख के तो और भी मुश्किल है। आप 10 मिनट बोल के दिखा दीजिए, 5 मिनट बोल के दिखा दीजिए हमारे लहजे में, हम मान लेंगे आपको। ये एक कला है, एक विद्या है, एक नॉलेज है जो हम में है, आप में नहीं है, क्योंकि आप वोटर हैं। आपके लिए इतना ही ज्ञान काफी है, इसको रखिए। आप ज्यादा रखने की कोशिश करोगे तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि हम हैं जो हैं, हम वही रहेंगे। हमें अपने ऊपर से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हम नेता हैं। जो करते हैं अपने दम पे करते हैं, सरकार बनाते हैं तो अपने दम पे बनाते हैं, किसी दूसरे दल के एमपी या एमएलए को खरीदते हैं तो अपने दम पे खरीदते हैं। हमारे इतने लोगों से रिश्ते हैं, ताल्लुक हैं कि हम सब कुछ हैं। हाँ, आपको सिर्फ अपना वोट हमें देना है, ज्यादा की हम सकते हैं। कभी ना पूछना आप कि आपके लिए क्या किया, आप ही ये सोच रहे हैं, आप ये सोचते रहेंगे। हाँ, करेंगे अपने लिए। हमने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, सही कहा था। हमने कहाँ बेचा? हम देश नहीं बेचा, हमने देश के अंदर कंपनियां ही तो बेच रहे हैं, देश के अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म ही तो बेच रहे हैं, देश के अंदर हवाई अड्डे ही तो बेच रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे बताइए? अरे हमने हमारा भी काम हल्का किया, आपका भी काम हल्का किया। जब लोग करेंगे, सरकार नहीं करेगी, तो कम से कम सीएजी तो नहीं आएगी, कोई और तो नहीं आएगा। अरे उनकी, हमने तो पैसा लेके रख दिया अकाउंट में, हमने पैसा देश में लगाना है। हाँ, अगर फिर कम पड़ा तो हम फिर टैक्स लगा देंगे, आपसे ले लेंगे, आपको देना होगा क्योंकि आप इस देश में रहते हैं। हाँ, वोट आप देते रहना साथ में टैक्स के, याद रख लेना। वोट नहीं दोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं, जो मर्जी करा लीजिए मुझसे। हाँ, तो मैं सब कुछ बेच सकता हूं, मैं एक्सपर्ट सेलर हूं, मैं सब कुछ बेच सकता हूं, मुझे चाहिए, क्योंकि वो भी मैंने बेचना है और वो आप रोक नहीं सकते, याद रख लेना। भी तो मैं ले जानता हूं, आपसे ले लूंगा, आप देखते रह जाएंगे, मैं ले लूंगा। ये मेरी शक्ति है, मेरी पावर है,
क्योंकि मैंने वो वोट भी बेचना या इसलिए कहाँ भाग के जाओगे श्रीमान, कहाँ भाग के जाओगे? इसलिए जैसे मैं कहता हूं वैसे करते जाओ, नहीं तो पीछे ईडी भी लगेगी, भी लगेगी, और जो लग सकता है वो लगेगा। नहीं तो आप बहुत पवित्र आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही मेरे मालिक हो। हाँ, वोट देते रहिए। एक ही आपसे कंडीशन है, शर्त है, आप वोट देते रहिए, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। आप आराम से रहिए, मैं भी आराम से। मुझसे मिलने की कोशिश करोगे तो अपना समय खराब करोगे, क्योंकि मुझसे मिलके आपको कुछ मिलना नहीं है। जो मिलना है मैं दे दूंगा, जो होना, लेकिन आप मेरा ख्याल करना, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, आशा मत रखना, क्योंकि मैं नेता हूं। सच बोलना मेरा काम है, झूठ में कभी बोलता नहीं, झूठी कसम मैं खाता नहीं। मैं बहुत स्वामी भक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं सारी भक्त हूँ, लेकिन मुझे आपका वोट चाहिए। जैसे भी मुझे दे देना, नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। जान लेना कि आपका क्या हो सकता है, आप सोच लेना। इतने सी बात आप समझ लेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ये सीट तो मैं छोड़ने वाला नहीं। और गलती से छूट भी जाती है, दूसरा कोई ले लेता है, तो मैं रात ही रात में उसे हटा भी सकता हूं। ज्यादा समय नहीं लगता मुझे, मेरे पास इतनी ऑटोमेशन हो गई है, रात रात में सब कुछ कर सकता हूं। रात रात में, कुछ घंटे में सब कुछ सामान्य कर सकता हूं। और मैं छोड़ता भी नहीं। एक बार चांस मिल जाए तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं भारत हूं, मैं नेता हूं भारत का। आग लग जाए देश में, बुझा भी मैं दूंगा, नौकरी भी मैं दूंगा, हवाई हवाई किले में बनाऊंगा। मैंने वादा ही तो किया था कि 10 करोड़ नौकरी दूंगा आपको, गारंटी तो नहीं दी थी। मैंने वादा ही तो किया था कि मैं आपको बाहर से लाके धन दूंगा, लेकिन मैंने गारंटी नहीं की थी। कोशिश करने को कहा था, कोशिश मैंने की, बहुत कोशिश की, दिन रात कोशिश करता हूं। जैसे भी वो कहते मैं जाता हूं, मिलता हूं उनसे, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करता, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं छीनता हूं, मैं कहता नहीं हूं। और आप में से भी सुन लीजिए सारे लोग, ये मत समझना कि मैं खाली कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो मैं करता भी हूं, क्योंकि मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आपको भी मुझसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने देना है आपको देना है, वही देना है। नहीं भी देना तो नहीं भी देना है, लेकिन हाँ, सीट मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी सीट है ये, मेरी सीट। विरोधी दल तो बोलते रहेंगे, उनका तो काम बोलना है। आप तो मेरे विरोधी नहीं है, आप तो मेरी जनता है, आप तो मुझसे प्यार करते हैं। इस प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट आपको चाहिए, दोनों तरफ है। मैं खाता नहीं हूं ना खिलाने देता हूं, खाने देता हूं। हाँ, मैं लोगों को देश से जाने देता हूं, कोई बात नहीं, जाओ। कांग्रेस वाले काम करके खाते होंगे, और मैं कहता हूं काम करने की जरूरत क्या है, ऐसे ही जाने दो, ऐसे ही खा लो। थोड़ा फर्क है दोनों की सोच में। अरे जब खाना है तो काम करने की आवश्यकता क्या है, ऐसे ही खा जाओ ना। काम करके खाएंगे लोग फिर भी गलत कहेंगे, बिना काम ही खा जाओ थोड़ा ज्यादा गलत कह लेंगे, लेकिन मुझे तो मिल गया, मुझे तो मिल गया ना। मुझे क्या, लोग हैं 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में भूल जाएंगे, किसको याद। जब कश्मीर को मैंने बंद कर रखा है, 3 महीने से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? किसी ने क्या कर लिया मेरा? कितने लोग सड़क पे आ गए, कितनों ने मेरे को बिगाड़ लिया। देखो आराम से रह रहे हैं सब, मैं कहता हूँ बड़े आराम से रह रहे हैं, लोग मान लेते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इस मेहनत करने की। सारी स्वतंत्र से रह रहे हैं, कश्मीर में बड़ी शांति है, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं, कोई मुझसे कांग्रेस के बेवकूफ लोग शोर बजाते हैं, बचाने दो, इनसे क्या क्या फर्क पड़ता है इनसे। मेरी जनता मेरे साथ है, वो मेरी जनता नोटबंदी में मेरे साथ थी और कश्मीर बंदी में भी मेरे साथ, वो जनता मेरे साथ है। और जब जन सलाब मेरे साथ है तो यमराज मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जनता मेरे साथ है,
मैं जनता का हूँ, जनता मेरी है, हाँ वोट मुझे दे देना। बस मेरी आपसे एक ही तमन्ना है, मुझे वोट से इनकार मत करना। वोट पर तो मेरा हक है, मेरा, सिर्फ मेरा। इतना याद रख लेना। लोकतंत्र जिंदाबाद होना चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदाबाद होनी चाहिए। नौकरी ना मिले तो भी खुश रहो, फैक्ट्री ना लगे तो भी खुश रहो, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो खुश रहो। अब शरीर है तो प्रॉब्लम तो आएगी, बीमारी तो आएगी, वो जाएगी भी। क्या फर्क पड़ता है कुछ लोग मर जाएं, कुछ झगड़े हो जाएं, चलने दो ना। आज कल 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 15 दिन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे मत भूलना। मैं भूलने वाली चीज नहीं हूं, मुझे याद रखना ये जरूरी है। नहीं तो जानते हो मैं आपका क्या कर सकता हूं, जानते हो आप सब। मैं तो रात रात में सरकारें बना भी देता हूं और सब कुछ कर देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी दे देता हूं। ये हाल कहीं भी हो सकता है, याद रखना। ये धमकी नहीं, मेरा प्यार है आपसे, क्योंकि मेरी भाषा ऐसी है कि धमकी, प्यार में भी धमकी होनी चाहिए और धमकी में भी प्यार होना चाहिए। ये भी तो एक चरित्र है हमारा। दिस इज माई कैरेक्टर, दैट आई ऑन यू बोथ वेज। You love me and I love you. I think differently and you think differently. Even then we are living together. This is most important. Don't you think that? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए, झगड़े हो गए, कुछ जलसे हो गए मेरे खिलाफ, होने दो। क्या फर्क पड़ेगा? अपोजिशन है भाई, बोलेंगे। लोकतंत्र है, बोलेंगे। लोग नहीं बोलेंगे तो क्या जानवर बोलेंगे? बोलना तो हमका हक है, हमको बोलने दो। बोल ही तो रहे हैं, मेरा क्या ले रहे हैं? मेरा तो कुछ नहीं ले रहे, मेरे को तो वोट मिल रहे हैं, वही वोट मुझे देंगे। शोर भी वही मचा रहे हैं, शोर भी वही मचा रहे हैं, वोट भी मुझे देंगे। राष्ट्रभक्ति के लिए देंगे, देशभक्ति के लिए देंगे, स्वामी भक्ति के लिए देंगे, देंगे मुझे। मुझे विश्वास है, ये मेरा विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा विश्वास आपको मानना ही पड़ेगा। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, यही रिपब्लिक है, यही सेकुलरिज्म है, यही सोशलिज्म है, सब कुछ यही है। बस लोकतंत्र की जय हो, भारत की जय हो, वोटर की जय हो। जब वोट दे दे तो, नहीं तो फिर क्या होगा? जय तो नहीं होगी, क्या क्या होगा आप जानते। ईडी होगी, सीबीआई होगी, और भी कुछ होगा, और कुछ होगा। हम फंसा देंगे कहीं, आपको फंस जाएंगे आप। नहीं तो सीधी तरह से वोट दे देना। फिर मत कहना कि हमने क्यों नहीं कर दिया, क्या कर दिया। हम नहीं देख सकते कि हमारा वोट कहीं और जाए, और हमें ऐसा लगा भी कि वोट कहीं और जा रहा है, हम जाने देंगे। उस दिन तो जाने देंगे। हाँ, 1-2 रात बाद मशीनें दूसरी ला के बदल देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना तो हमें करना भी चाहिए, इतने ईमानदार तो हम हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं। ऐसा ईमान दुनिया में किसी का नहीं होगा जैसा हमारा है। पक्का ईमान, कच्चा नहीं, पक्का ईमान है, क्योंकि हम इंसान, और इंसानी फितरत है ये। अब आप सोच लीजिए, लोकतंत्र चाहिए या क्या चाहिए आपको? लोकतंत्र तो ऐसे ही चलेगा, हम तो यही डेफिनेशन मानते हैं इसकी। हाँ, अगर आप इसके खिलाफ जाना चाहेंगे तो फिर मत सोचना हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको फिर नुकसान भी हो सकता है। याद रखना, हमारे कैमरे सारे में लगे हुए हैं, सारे देश में लगे हुए हैं, आपके घर घर में लगे हुए हैं। हम आपकी सारी बातें देख रहे हैं, फिर नुकसान आपका होगा, किसी का नहीं होगा। फैसला आपने करना है कि आपने हमारे साथ बात मानी है या नहीं मानी। मानोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं मानोगे तो फिर देख लेना क्या होगा। बहुत कुछ होता है देश में, बहुत कुछ आंदोलन होते हैं, बहुत कुछ लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। वो एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन करने दो। लेबनान नहीं है ये कि जब हमें मजबूर किया जाएगा कि हमें त्याग पत्र दे दें। इराक नहीं है जहाँ मजबूर कर दिया जाएगा त्याग पत्र दे दें। और भी कई जगह त्याग पत्र, वो हम सब नहीं। हाँ, हम लोकतंत्र है अवश्य। What else? What else to say? You tell me.
If you have to define your democracy, how shall you define in current scenario? Have you ever thought of, as an educated person, you think how to define that? This is all a definition, it's a practical definition. Vote me, vote me, vote me. Vote none else, vote none else, vote none else. And if you don't vote me, you know what can I do? Very, very simple. Very, very simple. But I shall not leave this government for further 20 years at least. I have to be there. Democracy has been defined truly, or you define yourself and act upon this and see what happens. But as a citizen of this country, my democracy is different. My democracy is not netacracy, not partycracy. My democracy is publicracy, citizencracy. I want to see a day when 400 to 500 member of parliaments in Lok Sabha chosen by people independently. Public should get that much awareness that they elect independent persons who are not related to these political parties and who are angry and hardworking. I respect those people if they come to power. It has not happened yet. It will take years. But if you start thinking this way, you can find solutions. That's more important. Everybody says economy is falling. Yes, it is falling. But there are some people who says everything is fine. All is well. Everything is okay. Nation is turmoil. Nation is turbulence. Nation is high waves. Tsunami is coming. Tsunami of national destruction is coming. Economical destruction is coming. It's rising 100 meters and we are saying everything is fine. Factories have been closed. Industries have been closed. People have been laid off and everything is fine. People don't have jobs. Everything is fine. Yes, everything is fine because I am not a worker. I have no worry for job. Everything is fine. There is rape. There is unrest. Everything is fine. There is law and control. Everything is fine. Everything is fine. And some institutions are silent spectators like judiciary. Silent spectators. They do not say that they are responsible for the society. They do not say that. Though they are responsible. Under Constitution, they are responsible also. But they don't take that responsibility. Some case comes, they look into that and they adjudicate. But as far as responsibility is concerned, they are not responsible. Not at all. I am court. I am ministry. I am MP. I am MLA. We are. We are that. And we proudly say that we are. Trust us. Don't speak against us. But it will take 30 years for adjudication of civil cases and many years for criminal cases. That is our efficiency. You have to accept that. And even if you don't accept it, what shall you do? We are immunity. No. We are people of higher rank. We are people of high profile. You cannot go against us. What shall you do? What shall you do? Tell me. Yes, I cannot do against you. I cannot oppose you. Because you are my honorable persons. You are my honorable addressee. Only I can weep. I can kill myself. I can commit suicide. That's okay.
Commit suicide. You can commit suicide. What I can do? You are not causing any loss to me. You have full right to kill you. Kill. You think we will have shortage of people? No. My dear citizens, open your minds, open your eyes, open your brains. Life is not easy as we are taking. If such situation continues, we will find different nation. There is limit to tolerate. If limit exceeded, you know what happens? If limit exceeds, excess of everything is bad and worst. Everything is bad and worst, believe me, when it's excess. Don't believe in excess of democracy. Don't vote blindly. Open mind and treat these people coming to you for vote as your servants. Ask questions. Catch hold of them. And if they don't come to you, to talk to you, to listen to you, condemn that candidate, whoever that candidate be. And if they don't come to you, don't vote. Better. And if they come to you, whosoever, ask full details, ask his background, crime or no crime, corruption or no corruption, how much money he is having, how much wealth his one is having. That is very important. जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, ये दानव बने रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे, आप लूटते रहेंगे, आप ये भी नहीं जानेंगे कि आखिर ये है किस खेत की मूली। मैं वोट तो इन्हें दे रहा हूं, पर ये है कौन? डकैत हैं या सीधे हैं? पुजारी हैं या चोर हैं? लफंगे हैं या अच्छे हैं? झूठे हैं या सत्ते हैं? ये सब जानना तो आपका हक है। ये भारत को जानते भी हैं कि नहीं? ये संविधान को मानते भी हैं कि नहीं? ये किस तरह के लोग हैं? इतना जानना तो आपका हक बनता है, आपके अधिकार में आता है। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो मैं नहीं समझता फिर आप मानव हैं। इतना भी नहीं समझ सकते आप। अब आपके 70 साल की लोकतंत्र हो चुका है। अगर आप अभी भी इतना नहीं सीखे, यूनिवर्सिटी तो सब कुछ नहीं सिखाती, विश्वविद्यालय आपको सब कुछ नहीं सिखाएगा। सीखना तो आपको स्वयं पड़ेगा। आपके तजर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से आपको सब सीखना पड़ेगा। और आप सीख चुके हैं, लेकिन दुख है कि आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। आपके बच्चे नहीं जानते। मैं देखता हूं डिबेट्स में, इस पार्टी के आंसर पे भी ताली और उस पार्टी के आंसर पे भी ताली। समझ कुछ नहीं आया, बस ताली ताली। क्या फायदा? क्वेश्चन नहीं पूछते आप, मजबूत उनसे ताली बजाते हैं उनके जवाब पे। आपस में दो कुत्ते लड़ रहे हैं राजनीति के, उनकी बातों को आप एंटरटेन कर रहे हैं। आप अपने प्रश्न नहीं पूछते, आप फोर्स नहीं करते उन चैनल्स को कि हमें प्रश्न पूछना है, हमें आपकी फालतू की डिबेट नहीं सुननी है। ये हिम्मत जब तक आप में नहीं आएगी। आप वहां किस लिए गए हैं? अपनी बात करने गए हैं, उनकी बातें सुनने नहीं गए हैं। वो तो बोलेंगे, एक दूसरे की काटेंगे, इसकी बात पे आप ताली और उसकी बात पे आप ताली, बीच में आपकी रह गई खाली थाली। आप क्या खाएंगे उसमें? आपने पूछा कुछ नहीं, आपको पूछने नहीं देखता। क्या करने जाते हैं डिबेट में? क्या हंसने जाते हैं, ताली बजाने जाते हैं, हा 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 करने जाते हैं? क्या राजनीति से ही कहते हैं, लोकतंत्र से ही कहते हैं कि आपकी बात ही ना सुनी जाए? अरे आप पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छी डिग्री आपके पास है, फिर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? उनसे डरते क्यों हैं? किस बात का डर है आपको? आप संविधान पढ़िए तो सही, समझिए तो सही कि आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। आपको तो पता भी नहीं होता कि वो किस चीज का चुनाव कर रहे हैं। आपके अधिकार क्या आप जानते भी नहीं, और उनसे जानते नहीं तो पूछते भी नहीं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपकी पढ़ाई का फायदा क्या है फिर?
क्या आपकी पढ़ाई सिर्फ नौकरी लेने के लिए सीमित है? आप ये भी नहीं जानते कि वोट का मतलब क्या है, वोट क्यों दिया जाता है? तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर आपने नहीं सीखने की कोशिश की, आपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा, तो आप अपने आप सीखिए। अखबार भी तो आप पढ़ते हैं, समाचार भी तो आप देखते हैं, और भी काम आप ऐसे करते हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। इसको भी तो सीखिए ना आप 20-30 आर्टिकल नहीं पढ़ सकते संविधान में? कौन कहता है कि आप 396 पढ़िए? आप लिमिटेड पढ़िए, जो आपके काम में हो, जो चुनाव को समझाते हो, जो कहते हो कि चुनाव क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, ड्यूटी क्या होती है, इतना तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं पढ़ सकते आप, आपको शौक भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आती बात। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आप बैठे हैं, आप रिसर्च करके बैठे हैं, आपने पता नहीं कितनी कितनी किताबें स्टडी की हैं, कितने सब्जेक्ट पास किए हैं, लेकिन आपसे 20 पेज नहीं पढ़े जाते। दुख तो इस बात का होता है। क्या आपको समझ नहीं आएंगे उसमें? उसमें क्या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है जो आपको समझ नहीं आता? आपने बीए में किया हुआ है, क्यों नहीं पढ़ते आप उसको? ये मैं बताऊंगा। आप में ये नहीं है। आप इतना बड़ा यूज करते हैं, इतना बड़ा वोट देते हैं, इन एमपीओ को चुनते हैं जाके, बिना ये समझे कि क्यों चुन रहे हैं, बिना समझे समझे। आपको कोई नेता नहीं कहेगा संविधान पढ़िए, कोई नेता नहीं कहेगा आपको किसी पार्टी का फेरा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि नेता तो चाहता ही नहीं आप पढ़ें। कोई नेता नहीं चाहता कि आप संविधान पढ़ें, उसके बारे में जानें। क्योंकि आज ये सरकार है, ये चाहती है कुछ ना जाने कोई, कल तो दूसरी सरकार भी आ सकती है, वो भी वही चाहती है। ये भी ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं, वो भी ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं। चोर दोनों हैं, दोनों जानते हैं गलत है, ईवीएम से चुनाव कराना, चीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ ईमानदार कोई नहीं है। हाँ, अगर देश ईमानदार होता, हमारा कल्चर में ईमानदारी होती, सब कुछ ठीक होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तो हर आदमी अपना फायदा उठाना चाहता है। इसलिए भूल जाइए इसको और भूल जाइए उसको, अपने इसको इस्तेमाल कीजिए। सच्चाई को पहचानिए, सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी सी बात करके मैं आप बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आपका धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।